नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? मैंने ज्वाइन कर लिया आपके आज्ञा अनुसार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं ऑडिबल हूँ क्या? यस सर। फाइन, थैंक यू। We will start just within 1 or 2 minutes sir. नहीं ठीक है, मैं 2 मिनट पहले मैं जुड़ा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई नहीं, बस थोड़े से और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं सर। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। यस मीरा मैम। हाँ डॉक्टर उर्मिला। May I start now? I think we should start. 81 participants have joined. Yes. Okay. Good morning everyone present over here. I, Dr. Urmila, Assistant Professor in Chemistry in UIT Kurukshetra University Kurukshetra, on my own behalf and on behalf of this forum, Kurukshetra University Kurukshetra, welcome you all in this event. Today we have met here via this Google Meet link in order to organize the event under the umbrella of Science Carnival 2022, and today's event is Science Storytelling Event. This event will be preceded by a lecture which will be delivered by our eminent speaker, Shri Krishna Singhal, which is with us in this meeting. I welcome you, sir, personally, on my own behalf and on behalf of Women in STEM Forum Kurukshetra University Kurukshetra. Before the start of lecture, I would like to tell you something about WIS Forum Kurukshetra University Kurukshetra. The Women in STEM Forum Kurukshetra University Kurukshetra was established in 2019. This forum was constituted with the frame of background to empower the women faculty of science, engineering and technology, life science, mathematics to carry their career and research without any hurdle. This forum also guides them about the available opportunities for their future endeavor. Further, this also provides a platform to identify the hurdles being faced by women in STEM and suggest the possible solutions for these. Also, this forum acts as a platform to promote the girl students from school, UG and PG courses and increase their scientific temperament to carry out their career in various streams of STEM through group discussion, interaction, workshop, lecture series, etc.
Sir, this event, Science Carnival, that is also a part of this thing. And we have organized this science quiz on 22nd of this January. Then the second event under the Science Carnival, that was the on-spot costume making competition for school students, UG and PG students. And today we have the third part of the Science Carnival, that is the science storytelling. The school students from 9th to 12th class of different streams, they will be participating in this event today. And on 4th of February, the fourth component of the Science Carnival, that is the PowerPoint presentation, that will be organized. Sir, I welcome you again. Now, I would like to invite Dr. Neera Raghav, who will introduce about our eminent speaker, which are present with us. Ma'am, please. Neera ma'am. सभी को नमस्कार. थैंक यू डॉक्टर उर्मिला. मैं नीरा राघव विस फोरम के सभी मेंबर्स की तरफ से आज के एक्सपर्ट लेक्चरर के वक्ता श्री कृष्ण सिंघल जी का स्वागत करती हूं और अपना कीमती समय देने के लिए आभार व्यक्त करती हूं. I also welcome the faculty members of Kurukshetra University, Kurukshetra, principal and faculty members of University School, Senior Model School, Shri Singhal ji, after doing... Ma'am, your voice is not clear. Hello? Ma'am, voice is not clear. I think... Clear was. It is clear, ma'am. Okay. Clear, ma'am. Clear. Shri Krishan Singhal ji, after doing BTech in Chemical Engineering from Punjab University, Chandigarh, did his MBA, and he possesses 34 years of research experience in the development of Indian Oil Corporation Limited. He is working as AGM, Indian Oil Corporation Limited, Faridabad. The area of research in which he is working is transportation of waxy crude oil through buried long-distance petroleum pipelines, inducing flow of petroleum pipelines without changing hardware with the use of drag-reduced chemicals. He is also working in the development of tools for inline inspection of long-distance petroleum pipelines and development of extraction processes. Development of laboratory information management and packages is also under her supervision. He is involved in implementation of SAP Enterprise Resource Management Package in R&D of Indian Oil. He is also monitoring the ISO management of research laboratories. He has also implemented the knowledge of management of R&D by pooling all knowledge resource at one place and accessing them to all the users. He has published many research papers and reports in the journals of national and international conferences. He has visited, he is a wide visitor, and he visited Italy, Germany, USA, Malaysia, Singapore, in connection with various conferences, training programs, and meetings. Singhal ji is not only related to the field of research and development, but has also various social areas of interest also. He is involved in the health and education care of needy. He is associated with various orphanages and is looking after the food drive of orphanage. And he is also involved in various charitable organizations. He is trying to develop the national feeling and spirit by organizing seminars and workshops. Now, today he will be delivering the role of science and technology in life, society, and especially the nation development, a very important topic of the day. And it is the requirement of the society as well as national building. Now I invite Singhal ji to please take over the mic. Thank you, sir. Thank you so much, Professor Neera ji. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को
डीन को और साथ में जो WIS का कमेटी है उनको एक हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके स्टूडेंट के सामने, फैकल्टी के सामने कुछ अपने विचार रख सकूं। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता लग रही है कि इस बड़ी संख्या में जो लोग, कम से कम एक लगभग 100 के करीब स्टूडेंट्स हैं और अध्यापक इसमें जुड़े हुए हैं और उसमें अधिकांश महिलाएं हैं। क्योंकि इसका नाम भी WIS है, इसलिए भारत का जो फ्यूचर है वो अगर कोई सेफ रख सकता है तो वो वुमेन जी रख सकती हैं। और इसलिए वुमेन इन साइंस ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया है। क्योंकि सामान्य रूप से यूनिवर्सिटी कार्निवल करती हैं, लेकिन महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाते हुए ये कार्निवल करें और स्टूडेंट्स में एक विज्ञान के प्रति, केमिस्ट्री के प्रति रुचि पैदा हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो विषय है, आपने बताया, बहुत ही सुंदर विषय है कि किसी भी देश के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, साइंस एंड डेवलपमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है, इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले 2-3 बातें मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा जिसको कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। देखिए, 2011 को यूएनओ ने एक केमिस्ट्री वर्ष घोषित किया था। उसमें जो मैडम क्यूरी थी और उसको जो नोबेल प्राइज मिला था, उसके 100 वर्ष पूरे हुए थे। और अभी भारत में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट चल रहा है, अमृत महोत्सव। भारत की आज़ादी की, स्वतंत्रता के और 75 वर्ष अभी पूरे होने जा रहे हैं। और उस 75 वर्ष में किस किस प्रकार के सेलिब्रेशन है, ताकि हमारे युवाओं में, हमारी अगली पीढ़ी में और खासकर महिलाओं में भारत के प्रति जो लगाव पैदा हो जाए, भारत के प्रति जो प्रेम पैदा हो जाए, उसके प्रति एफिनिटी पैदा हो जाए और उसके लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा मन में पैदा हो जाए। इसलिए मैं आज के वर्तमान जो शासन प्रशासन में लोग हैं उनको इस ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। और इस अवसर पे भारत की आज़ादी जिनके कारण आई, वीर शहीदों के कारण, वीर सैनिकों के साथ, महापुरुषों के कारण, उन सबको मैं सादर नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें और हम उनकी प्रेरणा से देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। दूसरा, इस आज़ादी के महोत्सव पे एक बहुत ही सुंदर इस बार इवेंट हुआ है। हमने देखा दिल्ली में, और वार मेमोरियल पे जो अमर जवान ज्योति को लिंक किया। आप सबको मालूम होगा अमर जवान ज्योति बहुत पहले से और इंडिया गेट पे प्रज्वलित होती है। लेकिन आपको ध्यान होगा, इंडिया गेट पे जिन सैनिकों के नाम हैं वो भारतीय सैनिक जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने जो युद्ध किए, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सत्ता को बरकरार रखने के लिए युद्ध किए, उनके नाम वहां पर हैं। फिर भी मैं उन सब सैनिकों को नमन करता हूं। लेकिन भारत सरकार ने जो वार मेमोरियल विकसित किया है, उस वार मेमोरियल पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के, सेकंड वर्ल्ड वार के और हिस्टोरिकल 1857 के, उन सब वीर सैनिकों के, शहीदों के नाम अंकित करके, सारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम अंकित करके, आज तक जो भी जिन्होंने और इस देश का गौरव बढ़ाया है, इस देश की सुरक्षा की है, उन सबकी मेमोरी में जो वार मेमोरियल खड़ा किया है, उन दोनों ज्योतियों को लिंक किया है। ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। और इसके साथ साथ जो इंडिया गेट पे एक छतरी है, जहाँ कभी और जॉर्ज पंचम की प्रतिमा होती थी, एक भारत के रूलर के हिसाब से, लेकिन वहां पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाने का निर्णय किया है, मैं समझता हूँ इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में यह निर्णय लिखा जाएगा। कुछ वर्ष पहले जब यूपीए का शासन था, उस शासन में एक चर्चा चली थी कि इस छतरी के ऊपर पूज्य महात्मा गांधी जी की प्रतिमा और स्थापित की जाए। लेकिन पूज्य महात्मा जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कितना विरोध हुआ मुझे मालूम है।
और विरोध के कारण, क्योंकि लोगों को लगता था लुटियन है, और लुटियन में छतरी में अगर महात्मा गांधी की प्रतिमा लग गई तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के कारण इस लुटियन का नक्शा बदल जाएगा, लुटियन की छवि बदल जाएगी, इसलिए वो प्रतिमा लग नहीं पाई। लेकिन आज के कुशल नेतृत्व ने जिस प्रकार निर्णय किया, क्योंकि आजादी जिनके कारण आई इसमें सबसे बड़ा अगर रोल है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है और आईएनए का है। आईएनए का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में किया, जर्मनी, जापान और सिंगापुर, इन सब लोगों की सहायता से, और बहुत बड़ा गठन किया। 60,000 सैनिक, आप कल्पना करके देखिएगा। ब्रिटिश एम्पायर के दस्तावेजों में लिखा है कि भारतीय सैनिक जो है, हम उनको कितना सैलरी देते थे, कितनी सुविधाएं देते थे, उसके बावजूद भी वो सब अधिकाधिक जो है वो आजाद हिंद फौज की तरफ समर्पित थे। और आश्चर्य ये है कि नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी लगभग प्राप्त हो गई थी। हम नागालैंड में पहुंच गए थे और अंडमान में तिरंगा फहरा भी दिया गया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया, उसके कारण जो वार का परिदृश्य था वो बदल गया और नेताजी भी और गुमनामी में चले गए। हम सब जानते हैं कैसे उनका कहाँ कैसे और विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये सारा अपने आप में इतिहास है। और मैं उनको नमन करता हूँ आज। वो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा देने वाले, दिल्ली चलो का आह्वान करने वाले ऐसे नेताजी आज अमृत महोत्सव पे सरकार ने याद किया, जनता ने याद किया, हम सबके हृदय में वो विराजित हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण दिन इसी महीने में आता है। एक 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर भारत की श्रेष्ठता के बारे में दुनिया को ललकारा था, और उन्हीं स्वामी विवेकानंद युवा सन्यासी का और जन्मदिन 12 जनवरी को आता है। और भारत के विज्ञान को बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद का अहम रोल है। हम सबको जानकारी होगी एक बार, और शिप में स्वामी विवेकानंद और टाटा दोनों ट्रैवल कर रहे थे, दोनों में बात होना प्रारंभ हुआ। तो टाटा ने बताया कि मैं जापान जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी लेने के लिए, ताकि स्टील टेक्नोलॉजी लेके और स्टील का कारखाना जापान के सहयोग से नहीं, जापान के साथ मिलकर लगा सकूं। स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही, आप जाइए, बहुत अच्छा है, अनुभव लीजिए, लेकिन मेरा यह मत है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी से अपने देश में एक कारखाना लगाइए। आज स्टील का सबसे बड़ा जो कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है, इंडस्ट्री लगी है टिस्को नाम से, वो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से टाटा ने लगाई। तो इसलिए तीनों इवेंट जो मैंने आपको ध्यान में कराए बड़े ही महत्वपूर्ण इवेंट हैं, और मैं सारे समाज की ओर से सरकार को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि तीनों इवेंट को बहुत बड़े लेवल पे युवाओं को प्रेरणा देने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। और आज का जो विषय है मैंने भी बताया और प्रोफेसर नीरू ने बताया, एसएनटी इन डेवलपमेंट हो, इसके बारे में थोड़ा सा अगर विचार करते हैं तो विचार करें तो जो हमारे विकास का एक मापदंड है, डेवलपमेंट का एक मापदंड आज के जमाने में दो खासकर रहते हैं। एक जीडीपी होता है, एक पर कैपिटा इनकम होता है। थोड़ा सा विचार करें गहराई में, हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा करते थे, विश्व गुरु कहा करते थे। यानी विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश क्यों कहलाया विश्व गुरु, सोने की चिड़िया क्यों कहलाया, और क्या आकर्षण था कि इन्वेडर्स भारत पर आए, भारत की तरफ आए, भारत पे आक्रमण किया, भारत को लूटा और अपने को समृद्ध बनाया, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ ही रह गए। इसके बारे में थोड़ा सा अगर विचार करते हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य का समय का एक शासन काल विचार करिए जब अखंड भारत निर्माण हो गया था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य को निर्माण करिए, उसी समय सोने की चिड़िया कहा करते। उसी समय हमारी जो वैज्ञानिक गतिविधियां, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा मैं। जितनी भी विज्ञान में प्रगति हुई, वो सबसे अधिक प्रगति जो है और गुप्त काल में हुई हमारे देश में। और इससे भी थोड़ा आगे जाते हैं, आपको मैं थोड़ा सा डाटा देता हूं। अगर मैं 1700 का डाटा देता हूं, 1700 में भारत का जो जीडीपी था दुनिया की टोटल जीडीपी का 27% था। कैसे हो गया होगा?
क्योंकि पहले हमारी मान्यता थी कि दुनिया में कोई भी बड़ा समृद्ध है तो उसके पास पशुधन होना चाहिए, और पशुधन के साथ कृषि योग्य भूमि ज्यादा होनी चाहिए। कृषि के उत्पादन और पशुओं के उत्पादन ये ज्यादा होना चाहिए। जिसके पास ये ज्यादा है वही सशक्त है। लेकिन धीमे धीमे मान्यता बदली, और मान्यता बदलते बदलते जो कृषि के उत्पादन वो ज्यादा केंद्रित हो गए। इसलिए हमारे देश में जो कृषि उत्पादन थे, भले वो केरला हो, भले वो कर्नाटका हो, भले वो उत्तर भारत हो, सारे देश में जिस प्रकार की हमारी उपज होती थी, मसाले होते थे, इन सब का कितना बड़ा निर्यात हमारे देश से पूरी दुनिया में होता था। खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में, अफ्रीकन देशों में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। और उस व्यापार के कारण हमारी जो जीडीपी थी दुनिया की 27% जीडीपी थी। आप कल्पना करके देखो, 1600 में हमारे देश का जो व्यापार था वो बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला है। यानी लगभग और 200 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा था। और उसके 100 वर्ष बाद भी इंग्लैंड की जीडीपी इतनी भी नहीं रही। यानी हम इंग्लैंड से कितना गुना आगे थे। अगर इसका थोड़ा सा डिटेल, आप विज्ञान के छात्र हैं, मैं समझता हूँ इसका भी एक अध्ययन करेंगे तो आपको ये बहुत सुंदर डाटा आपको मिलाएगा और आपको एक कल्पना हो जाएगी कि भारत कितना समृद्ध था और क्यों समृद्ध था। देखिए, जब टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा शब्द है। अब बहुत बड़ा शब्द होने के कारण उसमें सारे के सारे बेसिक साइंस भी आ जाते हैं, अप्लाइड साइंस भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। क्योंकि इनका कुल मिलाकर देश के विकास के ऊपर और एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मान लो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। आपको ध्यान होगा, हमारे देश में एक स्थिति ऐसी थी कि हमारे लोगों के लिए 2 समय का भोजन नहीं उपलब्ध था। 1965 का वार हुआ था। 1965 के वार में और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के ऊपर अमेरिका का प्रेशर था कि आप पाकिस्तान से लड़ाई मत करो। लेकिन पाकिस्तान एक एग्रेशन वाला देश था, इसलिए लड़ाई करना आवश्यक था, उसको धकेलना बहुत आवश्यक था। तो अमेरिका ने धमकी दिया, क्योंकि अमेरिका उस समय PL-480 के अंतर्गत हमारे को गेहूं सप्लाई करता था, तो मैं आपकी गेहूं रोक दूंगा। तो आपको आश्चर्य होगा, अपने लाल बहादुर शास्त्री, युवाओं को शायद कम मालूम होगा, अपने लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश का आह्वान किया था कि आप एक दिन का उपवास करो, मंडे का उपवास करो। अगर मंडे का उपवास करेंगे तो 30 करोड़ 35 करोड़ लोग, अगर एक समय का भोजन होगा, हमारे देश की खाद्य समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन खाद्य समस्या समाप्त करने का एक समय का हाल था, और अमेरिका की चुनौती को स्वीकार करना था। और हमें मालूम है उस समय कैसा पराक्रम हमारी सेनाओं ने दिखाया, और युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई, और ताशकंद समझौता हुआ, हमने नेताजी को खो दिया, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया। लेकिन उस समय हमारे एग्री साइंटिस्ट ने चुनौती को स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार करके प्रोफेसर स्वामीनाथन के नेतृत्व में किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन खड़ा किया। और उस समय तो 35 करोड़ आबादी थी बंधु, आज 135 करोड़ आबादी है। 135 करोड़ आबादी को भी आज हमारे देश में सरप्लस अनाज है, सरप्लस अन्न है, खाद्य अन्न है, भले राइस हो या वीट हो। और आज ही विस्तार से एक आर्टिकल आया है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में वीट एक्सपोर्ट नेशन बनने वाले हैं। वीट एक्सपोर्ट नेशन कैसे बन गया? बगैर विज्ञान के, बगैर तकनीकी के, भले एग्री साइंस का किसी का भी रोल हो, हर एक का रोल इसमें अपने आप में रहता है। तो ऐसी एक रेवोल्यूशन हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन हुई। प्रोफेसर कुरियन के नेतृत्व में किस प्रकार की व्हाइट रेवोल्यूशन हुई। आज दुनिया में पहले नंबर का मिल्क उत्पादन देश है हमारा। ये ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारी ज्यादा होगी, लेकिन पर कैप्टा जो कंजम्पशन है वो दुनिया के अनेक विकसित देशों से हमारी कम है। उसके अनेक कारण हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से व्हाइट रेवोल्यूशन किया, अमूल किस प्रकार से किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ा किया, यह सब बहुत साल पहले नहीं हुआ, कुछ ही वर्ष पहले हमारे देश में हुआ। बाकी के कुछ रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक विचार करें, क्या ये रेवोल्यूशन आजादी के बाद हुआ?
क्या हमारे देश में, जैसे मैंने कहा, स्वर्ण पीरियड में, गोल्डन काल में, मुक्त काल में किस प्रकार से हमारा देश विकास हुआ, तो थोड़ा सा जब विकास करते हैं तो ध्यान में आएगा। कभी कभी मुझे वो गीत याद आता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती सिखलाई। जब ऐसा गीत जब गाते हैं तो गौरव से सीना फूल जाता है कि हमारे देश में किस प्रकार से और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ कौन कौन से विश्वविद्यालय थे, शिक्षा का क्या सिस्टम था। तक्षशिला को सब जानते हैं हम, नालंदा को सब जानते हैं, विक्रमशिला को सब जानते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं है कितने कितने और एकेडमिक्स वहां पर थे, किस किस प्रकार की शिक्षा वहां दी जाती थी। यानी सामान्य बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंसेज और युद्ध कला, इन सब की शिक्षा वहां दी जाती थी। हमारा देश बहुत बड़ी मात्रा में और दुनिया के लोगों को शिक्षा देता था। 10-10 हजार विद्यार्थी हमारे देश में आते थे और यहाँ शिक्षा लेकर चले जाते थे। सॉरी। तो आप कल्पना करके देखिए, और इसका एक विस्तार से विवरण, एक पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री, आप उसको पढ़िए, नेट पे उपलब्ध है, यू कैन डाउनलोड इट। हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा और विद्यालय और विश्वविद्यालय थे। यानी शिक्षा का कैसा नेटवर्क इस देश में था। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिशर्स ने हमारी शिक्षा का नेटवर्क को देखा और नेटवर्क को देखकर प्रभावित हुए, उस शिक्षा के मॉडल को विदेश में ले गए और वहां पे उन्होंने लागू किया। लेकिन वहां पे तो लागू किया और हमारी शिक्षा को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। सारे जितनी गुरुकुल व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसको तोड़ दिया और ब्रिटिश एजुकेशन उसमें लागू किया। तो उसका एक कारण है कि आज हम बहुत आगे जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़े। लेकिन फिर भी कुछ पहले का अगर विचार करें, जैसे मैं शून्य की बात किया, डेसिमल पद्धति की बात किया, ये कोई छोटी बात नहीं है कि डेसिमल पद्धति और शून्य का विकास भारत में हुआ। शून्य का विकास ना होता और डेसिमल पद्धति का विकास नहीं होता, आज न्यूक्लियर साइंस और स्पेस साइंस ये विकसित नहीं हो सकती थी। आज हमारे देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो गई है। दुनिया के अनेक देशों के साथ हमारे संबंध और हमने बना के रखे, और बनाने के बाद हम कहां तक बढ़ गए हैं। आप देखिए कौन से क्षेत्र में हम पीछे थे, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थे। सारी दुनिया ने हमें फॉलो किया। जब ये जीरो का विकसित किया आर्यभट्ट ने और बोधायन ने, दोनों ने मिलकर जब ये विकसित किया, पाई का आविष्कार किया, सॉरी, पाई का आविष्कार किया। आप कल्पना करके देखो, पहले दुनिया के लोग सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन आर्यभट्ट ने क्या निकाला, भास्कराचार्य ने क्या निकाला, नहीं ये गलत है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, प्रकाश की गति कितनी है, कितना समय में चक्कर लगाती है, एक्लिप्स कैसे होते हैं, यानी जो सारी की सारी मान्यताएं थी उसको एक विज्ञान का आधार दिया और विज्ञान का आधार दुनिया ने माना। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के और इन्वेंशन भारत में हुए। ओल्डेस्ट लैंग्वेज भारत की कितनी है आपको मालूम है? कितनी लैंग्वेजेस भारत में थी? 325 लैंग्वेजेस आज भी बोली जाती हैं। और मेडिसिन के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े और सर्जरी के उपकरण आज भी उपलब्ध हैं। और सुश्रुता ने प्लास्टिक सर्जरी के सबसे बड़े विद्वान हुए। ऐसे मेडिकल साइंस में चरक और अनेक बड़े बड़े जो चिकित्सक थे इस देश में पैदा हुए, और आज भी वो ज्ञान फ्रीली अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है। ये तो अनेक इस प्रकार के और हमारे बड़े और बहुत ऋषि मनुष्यों के रूप में वैज्ञानिक, इन्होंने अनेक आविष्कार किए। आज की जो टेक्नोलॉजी है, लगभग हमने सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी पहले विकसित किया था। और आज के भी कुछ समय, अगर लगभग 100 वर्ष के भी अगर वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो बीरबल साहनी
बीरबल साहनी ने किस प्रकार से और गोंधारा का फ्लोरा एंड फोना उसको स्टडी किया, सलाइन वाटर को स्टडी किया। आचार्य पीसी राय उन्होंने हिंदू केमिस्ट्री सबसे पहले उन्होंने बुक लिखी। और ऐसे ही डॉक्टर भगवान, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर, प्रोफेसर सीवी रमन और चंद्रशेखर को दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला, हम सब जानते हैं। मेघनाथ साहा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, कौन नहीं जानता इनका नाम। आज अगर न्यूक्लियर साइंस में हम दुनिया के साथ स्पर्धा में खड़े हैं तो विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा के कारण है। ऐसे केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में शांति स्वरूप भटनागर जी और हरगोविंद खुराना का नाम कौन नहीं जानता। मुझे ध्यान में जब मैं पढ़ा करता, हमारे प्रोफेसर थे गुप्ता साहब, वो कहा करते हरगोविंद खुराना वाज माय स्टूडेंट। और वो मुझसे एक पुस्तक लेकर गए और पुस्तक पे उन्होंने कुछ नोटिंग कर लिया। और पुस्तक वापस करने के लिए जब आए तो मैंने देखा पुस्तक के ऊपर नोटिंग है। तो नोटिंग से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और गुस्सा आके मैंने कहा, खुराना जी क्या कर दिया आपने? वो कुछ नहीं बोले क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बुद्धिमान थे। और उसके बाद जब उनको नोबेल प्राइज मिला, वो जो पुस्तक उनके पास रह गई थी वो पुस्तक एक गिफ्ट आइटम हो गया, यानी एक संग्रहित आइटम हो गया। यानी आप कल्पना करके देखो किस किस प्रकार के स्टूडेंट यहाँ हुए, किस किस प्रकार के अध्यापक प्राध्यापक यहाँ हुए। आज दुनिया में आई एम सॉरी, मेरा गला कुछ खराब हो गया है। तो आज दुनिया में हम किस क्षेत्र में आगे नहीं है। आप देखिए आईटी के क्षेत्र में आज सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा आईटी का है। न्यूक्लियर साइंस में हम बहुत आगे हैं, स्पेस साइंस में बहुत आगे हैं, रिफाइनिंग में बहुत आगे हैं, पेट्रोकेमिकल में बहुत आगे हैं। ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारतवर्ष का है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत है। आज से कुछ वर्ष पहले तक हम डिफेंस में आर्मी एंड एमुनिशन कितना इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्टर बन गए हैं। यानी लगभग हर फील्ड में हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। और एक समय आएगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसका जो परिदृश्य है वो कैसे बदलेगा। अभी मैं एक लगभग महीना भर पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया था। वहां मेरे को जानकारी मिली कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है दुनिया में, और सर्वे करके जो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं और उनका एक पूरा लिस्ट बनाया है। आप भी अगर देखेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट में आपको आश्चर्य होगा, 176 भारतीय साइंटिस्ट हैं। अब 100 भारतीय साइंटिस्ट में बहुत बड़ी लिस्ट है। प्रोफेसर आर्य माशेलकर हैं, प्रोफेसर अहमद कमल हैं, और अमृत सागर हैं, राजन बोस हैं, डॉक्टर के श्रीवास्तव हैं। इस प्रकार के 176 जो प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, वो भारतीय मूल के, भारत के उस लिस्ट में है जो स्टैनफोर्ड ने तैयार किया है। आप कल्पना करके देखिएगा, बड़े गौरव का विषय है। और इससे भी आगे थोड़ा सोचें तो अभी कुछ दिन पहले हमें ध्यान में आया कि हमारे भारतीय मूल के जो विदेश में लोग रहते हैं वो कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। कुछ नाम आपको मैं बताता हूं, जैसे सुंदर पिचई। अब सुंदर पिचई कितना बड़ा नाम है दुनिया में, हर एक कोई मिलना चाहता है। गूगल के सीईओ हैं। और लीना नायर कोल्हापुर की हैं, और वो एक बहुत बड़ी फैशन ब्रांड है, उसकी सीईओ हैं। सत्य नाडेला, अभी सत्य नाडेला का तो अभी पद्मश्री दिया सरकार ने, हम सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अभी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं, अपने को ध्यान में आ गया होगा। ऐसे ही और शांतनु नारायण है, अडोब के सीईओ हैं। ऐसे संजय मल्होत्रा है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। इस प्रकार कितने ही नाम हैं। और आपको आश्चर्य होगा, 2-3 नाम अपने हरियाणा के इतने मशहूर नाम हैं।
डुलाइट टुस्क के जो सीए हैं वो रोहतक से हैं और यहीं पढ़े हुए हैं। यहाँ से पढ़ के वहां उन्होंने अध्ययन किया। दुनिया के सबसे बड़े सोइल साइंटिस्ट कुरुक्षेत्र के पास जो कैथल स्थान है वहां क्लायत के हैं प्रोफेसर रतन लाल। अभी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन है, उसकी एडवाइजरी काउंसिल में है। आप कल्पना करके देखो, प्रोफेसर नरेंद्र कपानी, आज जो फाइबर ऑप्टिक सारी दुनिया में बिछ रही है, समुद्र के नीचे भी बिछ रही है, जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो आधार है, आज नेट पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक ना होता तो क्या होता, आप कल्पना करके देखिए। तो नरेंद्र कपानी, दुनिया में सबसे बड़ा उनको पुरस्कार मिला है। मास्टर कार्ड के प्रमुख कौन है? हमारे अजय पाल बांगा। आईबीएम के प्रमुख कौन है? अरविंद कृष्णा। इतने सारे नाम मैं जब लेता हूं तो मुझे गौरव से मेरा और सीना तन जाता है। यानी जैसे कहते हैं कि पूरी दुनिया कर लो मुट्ठी में, ऐसा भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो इंजीनियर हैं, भारत के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने पूरी दुनिया को और अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। लेकिन बहुत कम लोगों ने मुट्ठी में किया हुआ है। आज हमारे देश में कितना बड़ा साइंटिफिक पूल है। अगर सारे साइंटिफिक पूल का पूरा उपयोग हो जाए और पूरा उपयोग होके भारत की क्या स्थिति बनेगी, दुनिया की क्या स्थिति बनेगी, इसका अगर विचार करते हैं तो मैं समझता हूं विचार करके ही रह जाएंगे। शायद कोई कैलकुलेशन और कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। इतनी कम संख्या में इतनी टॉप पे पहुंच सकते हैं हम। जब अधिकाधिक संख्या होगी तो हमारे देश की छवि दुनिया में क्या होगी। जहां तक छवि की बात है बंधुओं, आज से कुछ वर्ष पहले जब भारत में जाते थे, भारत की छवि कैसी थी हम सब जानते हैं। आज भारत से बाहर रहने वाला भारतीय वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो या सामान्य स्किल्ड लेबर हो, जब कोई उससे पूछता कहां से आए हो तो वो कहता मैं भारत का हूं। तो भारत का कहते ही उसके बारे में जो धारणा बनती है वो बहुत बड़ी धारणा बनती है, पॉजिटिव धारणा बनती है। आज आप सोच के देखिए, अमेरिका में 33 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीयों की एवरेज इनकम जो है $1,20,000 पर एनम है, जबकि अमेरिका के सामान्य व्यक्ति की जो इनकम है वो $50,000 से $60,000 पर एनम है। और $50,000 से $60,000 पर एनम है। आप इससे ज्यादा प्रसन्न मत होइए कि भारतीय की 1,20,000 है और वहां अमेरिका की 60,000 है। प्रसन्नता जब होगी जब भारत के सामान्य नागरिक की जो इनकम है वो $60,000 के इक्वलेंट हो जाएगी। क्योंकि आज हमारी जो इनकम लेवल है पर कैपिटा इनकम है वो $2,000 है। अब $2,000 और 60,000 1:30 का रेशो है। इस 1:30 के रेशो को हमें पार्ट करना है, आगे बढ़ाना है, कम करना है। आज 1:30 का है, कल 1:20 का होगा और फिर 1:10 का होगा, फिर 1:5 का होगा। ये जितना रेशो कम करते जाएंगे विकास का क्रम उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन क्रम कैसे बढ़ेगा, आप विचार करिए थोड़ा सा। आज हमारे देश में 1014 यूनिवर्सिटियां रिकॉग्नाइज्ड हैं। आज हमारे देश में साइंटिफिक कितना है? हमारे देश में हर वर्ष कितने पीएचडी पैदा होते हैं? लगभग 24-25 हजार पीएचडी हमारे देश में पैदा होते हैं सारे विषयों को मिलाकर। अगर मैं अमेरिका को कंपेयर करता हूं तो वहां 60,000 से 64,000 पीएचडी हर वर्ष पैदा होते हैं। यानी हम अभी लगभग 30-35% अमेरिका के मुकाबले में है। और मैं देखता हूं आज यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी होंगी उतना साइंटिफिक पूल और एकेडमिक पूल हमारा बढ़ेगा, हमारी पीएचडी और हमारी रिसर्च बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि मानो हमने 24,000 पीएचडी यहाँ जनरेट किया। अब 24,000 पीएचडी में अगर मैं आधा भी लगा लेता हूँ कि आधा साइंटिफिक फील्ड में होगा और आधा आर्ट्स के फील्ड में होगा, तो 10-12 हजार पीएचडी जो साइंस के फील्ड में होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, उनका कमर्शियलाइजेशन लेवल कैसा है? जब मैं कमर्शियलाइजेशन की लेवल बात करता हूं तो मुझे निराशा ही हाथ रखती है।
मेरा कमर्शियलाइजेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशंस। उसका कारण कुछ भी रहा होगा। मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिसर्च साइंस एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, उसमें एक वाक्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लिखा हुआ था, मैं उससे सहमत नहीं हूं ज्यादा। उसमें लिखा था हमारा जो लेवल ऑफ रिसर्च है वो क्वांटिटी में तो ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी में वो थोड़ा पुअर है। हम दुनिया के जो अलग अलग विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट पीएचडी करते हैं उनके सामने हम ठहर नहीं पाते। क्यों नहीं ठहर पाते? क्या हमारे जो पेपर पब्लिश होते हैं, क्या हमारे जो पेपर प्रेजेंट होते हैं, क्या हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, क्या ये कॉपी पेस्ट पे आधारित है? क्या हमारा बेसिक रिसर्च नहीं है? क्या हमारे डेडिकेशन में कमी है? क्या ये सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में सारे स्टूडेंट्स के सामने, और हमारे को चुनौती देते हैं कि क्या मैं दुनिया की चुनौती को स्वीकार कर सकता हूं? क्या जब इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा साइंटिफिक पूल मेरे देश में अवेलेबल है, इतना बड़ा सीएसआर लेबोरेटरी का नेटवर्क है, डीआरडीओ लेबोरेटरी, 100 से ऊपर लेबोरेटरी हमारे देश में आज उपलब्ध है, और 100 से ऊपर लेबोरेटरी उपलब्ध नहीं है, इससे ज्यादा 23-24 आईआईटीज हैं, आईआईएम है, एनआईआईटी हैं, और निफ्टेम जैसे बड़े बड़े संस्थान इस देश में हैं। इन सारे संस्थानों का जो प्रोड्यूस है वो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा है, बट वेयर इट गोज अदर डे आई वाज सिटिंग विद डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली। मैंने उनसे पूछा, आप बताइए आपका ब्रेन ड्रेन कैसा रहता है? उनका 10 साल पहले 90% ऑफ आईआईटी स्टूडेंट, एक बात बीच में कह देता हूं, आईआईटी में जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, आप दुखद कहिए या सुखद कहिए, 80% जो है नॉन आईआईटीएन हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट बीएससी बीटेक वो आईआईटी से नहीं किया हुआ, नॉन आईआईटी हैं। इसलिए आईआईटी और बाकी संस्थानों में कोई बहुत अंतर नहीं है, पढ़ाने वाले नॉन आईआईटीएन हैं। तो डायरेक्टर आईआईटी ने मुझे बताया कि आज से 10 साल पहले 90% ऑफ आवर आईआईटी ग्रेजुएट्स, अगर ध्यान से सुनिए इस बात को, 90% ऑफ आईआईटी ग्रेजुएट्स they were leaving the country and going to US and other European nations. But now things have changed. What has happened? It has reversed. 90% of IIT engineers and engineers from good institutions, they are staying back in India. Only 10% are going abroad. I was so happy to hear that. कि 10% लोग कुल मिला के भारत से बाहर जाते हैं और 90% भारत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो 90% जो है जो भारत में रहते हैं वेयर दे गो। तो उनका आंसर सुन के मैं थोड़ा निरुत्साहित हुआ। उन्होंने कहा कि 90% में से एक लगभग 80% जो लोग हैं मल्टीनेशनल में जाते हैं और एक 10% जो है अपने नए नए वेंचर्स खोलते हैं। अब आप विचार करके देखिए, जो हमारे टॉप मोस्ट संस्थान हैं, टॉप मोस्ट संस्थानों में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का काम करने वाले लोग हैं, आधारभूत लोग हैं, उसमें से एक पार्ट विदेश में चला जाता है, आई डोंट माइंड इफ दे गो देयर, और एक पार्ट मल्टीनेशनल की सेवा कर रहा है। आप देखिए आईबीएम ने एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खोला है बेंगलोर में, ऐसे ही एक शेल ने बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खोला है। दे हैव डिप्लॉयड मोर देन 3000 इंजीनियर्स, आईबीएम ने भी और शेल ने भी, और सबसे ज्यादा जो पेटेंट है आईपीआर है वो भारत में पैदा होते हैं, लेकिन उसका ओनर कौन है? भारत नहीं है। मैं किसी स्टूडेंट को या किसी आईआईटी को दोष नहीं देता हूँ, ये हमारा सिस्टम का समस्या है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सिस्टम सरकार चिंता कर रही है उस सिस्टम में जरूर बदलाव आएगा, और कुछ समय के बाद हमारे सामान्य संस्थानों में, अच्छे संस्थानों के बीटेक, एमटेक और पीएचडीज अध्यापक भी बनेंगे, प्राध्यापक भी बनेंगे, रिसर्चर भी बनेंगे, और हमारे देश का जो साइंटिफिक पूल है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और साइंटिफिक बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि साइंटिफिक में कमर्शियलाइजेशन एंगल है, बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव होगा। और हमारा भारत क्या होगा? हमारा भारत आज हमें दिखाई देता नहीं हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया, और केमिकल इंजीनियरिंग करके मैंने मैक्सिमम अपना समय जो लगाया, जो
हजारों हजारों किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन होती हैं। इन पाइपलाइन में जब कोई भी कच्चा तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है तो सर्दी के दिनों में वो जमने की संभावना रहती है, और सर्दी के दिनों में अगर जम जाता है तो जमने के बाद उसका फ्लो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो जमे ना। They must be always in fluid state so that there is no gelling in the pipeline, क्योंकि जेलिंग के बाद रिस्टार्ट प्रेशर मल्टीप्लाई होता है और पाइपलाइन फटने के चांस रहते हैं। तो हम हजारों करोड़, आपको आश्चर्य होगा, हजारों करोड़ का 4 डिप्रेसेंट और इस प्रकार के केमिकल यूज करते थे। आज बहुत बड़ी मात्रा में नई टेक्नोलॉजी के साथ में उस समस्याओं का निदान हो गया है, और आज बहुत कम लेवल में इस प्रकार के वैक्स रिड्यूसिंग एजेंट्स और यूज होते हैं, और अनइंटरप्टेडली पाइप जो है बॉम्बे आई से लेकर मथुरा तक और पानीपत तक और बिल्कुल सीधा विदाउट एनी ट्रबल वहां फ्लो होती है। लेकिन उसके लिए हमें कितने साल लगे? 10 साल लगे। हमने बहुत बड़ा, और यहाँ अपने एक इंडियन ऑयल के रिसर्च सेंटर में बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट किया। वी स्पेंट अबाउट 100 करोड़ रुपीज ऑन दैट एंड वी कुड गेट सक्सेस। दूसरा मैं आपको ध्यान में करता हूँ, मान लो पाइपलाइन में हम फ्लो कर रहे हैं, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर 100 KL पर आवर की स्पीड से पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है, और मेरा क्रॉप के सीजन में 150 चाहिए। तो देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। द सिंपलेस्ट वे इज बीच में एक पंप लगा दो सो दैट पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। देन व्हाट वी थॉट ऑफ, नो, we don't require any additional pump because that is most उसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है और टाइम कंजम्पशन बहुत बड़ा है, और पूरे साल उसका यूज नहीं होने वाला। इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर month or 2। तो वी हैव डेवलप्ड some chemicals. What are the chemicals? Known as drag reducing agent. Who can do it? Only chemistry people can do it. These are high molecular weight polymers, और जब फ्लो में उसको पाइप वाल के पास इंजेक्ट करते हैं तो पाइप वाल के पास लीनियर फ्लो होता है और बीच में टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो उस टर्बुलेंस को वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में कन्वर्ट कर देता है एट द सेम फ्लो रेट, बल्कि फ्लो रेट बढ़ जाता है। जो एनर्जी टर्बुलेंस में वेस्ट होती थी उस एनर्जी को कैसे रिकवर करते हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान में कराना चाहता हूं मैं, जैसे बरीड पाइपलाइन होती है, और मान लो 100 किलोमीटर पाइपलाइन, मान लो दिल्ली से पानीपत एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में इंस्पेक्शन करना है। बहुत लोग उसमें, क्योंकि फील्ड के बीच में जाती है, वहां हमने बहुत बार देखा बहुत लोग वहां उसमें और कुछ ना कुछ पंक्चर कर देते हैं, कुछ ना कुछ थेफ्ट कर देते हैं। तो हम उनको रेगुलर इंस्पेक्शन करते थे। इसके इंस्पेक्शन का कॉस्ट 1.25 लाख किलोमीटर 1.25 लाख रुपीस पर किलोमीटर इंस्पेक्शन कॉस्ट था। हम लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर और इस प्रकार के और इनलाइन इंस्पेक्शन टूल, लगभग 3 मीटर लंबा टूल है, उसको डेवलप किया। एक एंड से उसको डालते हैं, लास्ट में निकल आता है। पाइप को बंद नहीं करना पड़ता, पाइप के फ्लो के साथ चलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है विदिन 24 आवर्स हम डाटा एनालिसिस करके, उस डाटा एनालिसिस से हम 1 मीटर के स्केल तक हम बता सकते हैं उसमें कितना मेटल वाल थिकनेस है। आप कल्पना करके देखिए, उस टूल में हमने फिजिक्स का उपयोग किया, यानी मैग्नेट्स का उपयोग किया, वहाँ कंप्यूटर का उपयोग किया, वहाँ केमिस्ट्री बैटरीज का उपयोग किया, वहाँ मेटलर्जी का उपयोग किया। सारी की सारी जो है साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांचेस का उपयोग करके क्लब करके एक ऐसा टूल डेवलप किया। और आश्चर्य होगा, हमारा कॉस्ट है 10,000 रुपया पर किलोमीटर इंस्पेक्शन कॉस्ट आता है। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने काम किया बहुत लंबा समय तक, और वहां में रिफाइनरी टेक्नोलॉजी, आज जितनी भी रिफाइनरियां भारत में लगी है, कोई भी ऐसी रिफाइनरी नहीं जिसका टेक्नोलॉजी रूस से, अमेरिका से ना आया हो। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत में कोई भी रिफाइनरी लगती है, कोलैबोरेशन भले ही हम करें, टेक्निकल कोलैबोरेशन भी करते हैं, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, लेकिन एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत में उपलब्ध है। हमारे को कोई भी टेक्नोलॉजी विदेश से लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आज हम रिफाइनरी के, पाइपलाइन के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर हैं।
उसके बाद भी हमारे पास चुनौतियां बहुत हैं। क्या चुनौतियां हैं? खासकर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को बहुत चुनौतियां हैं, विज्ञान के स्टूडेंट्स को बहुत चुनौतियां हैं, अप्लाइड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत चुनौतियां हैं। अभी हरियाणा में देख लीजिए, रोज पराली पे झगड़ा होता है। दिल्ली सरकार हरियाणा को कुछ ना कुछ एब्यूज करता है, हरियाणा दिल्ली को कुछ बोलता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है ना कि एक सीजन ऐसा आता है जब पूरा का पूरा जो वातावरण जो है प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। आज भी आप देखिए, आज AQI 300 है, 326 है, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट 40-45 की है। अब 40-45 के कोरेस्पोंडेंस में अगर मेरा 300 प्लस AQI है तो मेरा हेल्थ किसका इफेक्ट होगा? हेल्थ तो जनरल मासेज का होगा ना, हम सब का होगा ना। अगर यही रहता है तो मेरी अगर 70 वर्ष की एवरेज आई है तो 5 साल की एवरेज आयु कम हो जाती है। क्या ये साइंटिफिक वर्ल्ड को एक चुनौती नहीं है? इनको ऐसे तरीके निकालें और जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो जाए और हमारा क्वालिटी इंडेक्स वो भी इंप्रूव हो जाए। निश्चित रूप से सब कर सकते हैं। आज हमारा पानी कितना प्रदूषित है, भले वो सोइल वाटर कंटेमिनेशन हो, भले वो नदियों का पानी हो, पानी पीने लायक नहीं। हर घर में आरओ की क्या आवश्यकता है? मैंने दुनिया में कितने देशों में गया हुआ, आरओ किसी में नहीं लगा हुआ। अमेरिका के किसी घर में आरओ नहीं है, भारत को क्यों लगाना पड़ता है? क्या हमने आरओ बेचने का छूट दिया हुआ है? क्या आरओ बेचने का छूट तो दिया ही हुआ है, लेकिन इसलिए छूट दिया हुआ है क्योंकि हमारा पानी दूषित है। उस पानी को ठीक कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक वर्ल्ड में इस प्रकार के और शोध करने पड़ेंगे, इस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा पानी जो है वो और इफेक्ट ना हो, ड्रिंकेबल वाटर हो। मुझे नहीं ध्यान 20 साल पहले हमने कभी पानी की चिंता की है। आज हर एक आदमी पानी की चिंता करता है, पानी के कारण समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यानी वायु प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, सोइल प्रदूषित है। जब तीनों प्रदूषित हो जाएंगे और इस चुनौती को कौन स्वीकार कर सकता है? मैं समझता हूं साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, शोध छात्र हैं, इसको स्वीकार कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको स्वीकार करना यानी देश हित में काम करना, समाज हित में काम करना। और इसके साथ साथ हम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। मान लो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वेयर इट गोज। मैं लालच में आके कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करूंगा तो उपज पैदा हो जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादा फर्टिलाइजर और ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने के कारण पंजाब की क्या स्थिति होगी? पंजाब में कैंसर ट्रेन चलता है। हरियाणा भी उसी दिशा में जा रहा है। और कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा के बिल्कुल केंद्र में है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और कुरुक्षेत्र भूमि तो भगवान कृष्ण की भूमि है, यहाँ तो दुष्टों का भी संहार किया था। तो हमारे सामने आज दुष्ट कौन है? जो वायु को प्रदूषित करते हैं। हमारे सामने जो दुष्ट कौन है? जो जल को प्रदूषित करते हैं, जो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। और इन सबको शुद्ध करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करें, टेक्नोलॉजी का अवसर दें। तीसरा एक वेस्ट मैनेजमेंट। आप कभी कभी जब करनाल से निकलते हैं, कोने में कितने बड़े और सॉलिड वेस्ट के ढेर लग गए हैं। ये ढेर कितना ऊपर जाएगा? इट विल टच द स्काई। तो क्या हम अपनी लेबोरेटरी में कुछ बायोटेक्निक से ऐसा कोई शोध नहीं कर सकते कि सारे के सारे डिस्पोजल को बहुत इजी बना दें? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी कभी कोई शिप जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर या कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लेकर समुद्री रास्ते से आता है, वहां स्पिलेज हो जाता है। और स्पिलेज होने से क्या होता है? स्पिलेज होने से पूरा सरफेस खराब हो जाता है और वो साइल को, जब वहां का जो सी एनिमल्स हैं वो जब उस पानी को पीते हैं और हवा को लेते हैं तो मर जाते हैं। वो बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी फैलने का डर है। तो हमारे संस्थान ने और हमने टेरी के साथ मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और 3-4 साल लगाकर हमने स्टेज डेवलप किए।
उसी स्टेन्स को लेके हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते हैं उस एरिया में, और विद इन नो टाइम वो जो सारे के सारे स्टेन है ऑयल्स को खा जाते हैं, यानी स्प्रेडिंग भी नहीं होता और ऑयल भी समाप्त हो जाता है। हम एक कदम और आगे चले गए। अगर मानो सामान्य मुझे टैंक में क्लीनिंग करना है, तो उस टैंक में मैं स्टेज को छोड़ देता हूं, वो सारे ऑयल को अपने अंदर सोख लेता है और बाद में उस ऑयल को हम रिकवर कर लेते हैं, नीचे सैंड रह जाता है। यानी मेरे सामने सामान्य जनता के हित की चुनौतियां हैं। इन सारी चुनौतियों को मैं स्वीकार कर सकता हूं। मैंने आपको बताया हमारे देश के आपके कलायत के प्रोफेसर रतन लाल, उनको सबसे बड़ा और प्रेसिडेंट अवार्ड अभी मिला है, प्रेसिडेंट की और एडवाइजरी कमेटी में भी आ गए हैं। ऐसे अनेकों वैज्ञानिक विदेशों में काम करते हैं, भारत में भी काम करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जो लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, जो बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं, उन सबको विचार करना है। पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर एक को बीएससी, एमएससी और पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। Majority of the students, they must drop out at 12 o'clock, after 12, and they must develop skill. क्योंकि जब मेरे हाथ में अगर स्किल नहीं है तो मैं कंपटीशन के जमाने में ठहर नहीं सकता हूँ। आज हजारों प्रकार के स्किल हैं। हरियाणा ने तो स्किल यूनिवर्सिटी खोल दिया है। तो आई मस्ट हैव ए स्किल, मेरे हाथ में हुनर होना चाहिए। भले मैं इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं, प्लम्बर बन जाऊं, पेंटर बन जाऊं, कारपेंटर बन जाऊं, कैसा भी बन जाऊं, मैं कंप्यूटर आईटी का बन जाऊं। तो जब ऐसा मैं बनूंगा तो निश्चित रूप से मैं 1000, 2000, 3000, 5000 पे रोज कमा सकता हूँ, आराम से अपने परिवार का पालन कर सकता हूँ, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन जिनका विज्ञान में शोध करने की या प्राध्यापक बनने की इच्छा है, उनको बीएससी, एमएससी करना चाहिए। और बीएमएससी के जिनको शोध करना है, जो इस देश के बेस को डेवलप करना चाहते हैं, जो इस देश को दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बनाना चाहते हैं। आज हमारी इकोनॉमी जो है दुनिया में 5वें 6ठे नंबर की है। मैंने आपको बताया हमारा पर कैपिटा इनकम $2000 है। आज बंधुओं, ये एनिमल्स गिनकर कृषि के आधार पे मेरा इनकम नहीं बढ़ सकता। आज इनकम अगर बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी के आधार पर बढ़ेगा, विज्ञान के आधार पर बढ़ेगा। और टेक्नोलॉजी और विज्ञान, इसका बेस बढ़ाना किसके हाथ में है? हमारे बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी में और हमारे साइंटिफिक पूल में है। साइंटिफिक पूल के साथ साथ हमारे जो शोध छात्र हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या आगे आने वाले जो एमएससी के बाद पीएचडी करने वाले हैं, उनको जिस डेडिकेशन से काम करना चाहिए। आज सरकार ने भी और हमारे जेआरएफ को 75, कुछ संस्थानों में 75,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया है। स्कॉलरशिप इज नॉट ए प्रॉब्लम इज माई डेडिकेशन। मेरा टारगेट सिर्फ पीएचडी करना नहीं है। मेरा जो टारगेट है वो कुछ ना कुछ निकालना है, ताकि मैं उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि रियल लाइफ में अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, फिर टेक्नोलॉजी बेस बढ़ता है, और फिर टेक्नोलॉजी बेस बढ़ने के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी का लाभ सर्वसामान्य व्यक्ति के पास पहुंचता है। और सर्वसामान्य व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो फिर मैं टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बन जाऊंगा। और मेरा, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट विल बी हायर देन द इंपोर्ट, एंड वंस माय एक्सपोर्ट इज हायर देन द इंपोर्ट, मेरे देश की जो जीडीपी है आज दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे है, कल दूसरे और तीसरे नंबर पे आ सकती है। आप कल्पना करके देखो, कोई आप में से अध्ययन करे हमारे देश का प्रोडक्टिविटी कितना है। वी आर फार बिहाइंड देन डेवलप्ड नेशंस। मुझे याद है अब्दुल कलाम से एक छोटे से बच्चे ने उंगली पकड़ के एक क्वेश्चन पूछा था, सर आई वांट टू लिव इन डेवलप्ड नेशन, व्हाई आई शुड लिव इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, आई वांट टू लिव इन दैट। कौन है इसका आधार? इसका आधार हम सेल्फ हैं। और सबसे बड़ा सेल्फ में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है साइंटिफिक, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बेसिक साइंस पढ़ने वाला और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइंस में अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सब संकल्प करें, निर्णय करें, विचार करें, निर्णय करें और संकल्प करें। जब ऐसा संकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो टारगेट्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे। हम विचार करके देखें, हमारा एक रिसर्च एसोसिएट है या जेआरएफ है या एसआरएफ है, कितना समय लेबोरेटरी में लगाता है।
क्या मैं 10 घंटे रोज लेबोरेटरी में लगाता हूँ, 12 घंटे रोज लेबोरेटरी में लगाता हूँ? आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन BRC। आज हम न्यूक्लियर साइंस में क्यों आ गए हैं? क्योंकि वहां का साइंटिफिक पूल डेडिकेटेड है। आज हम स्पेस साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्यों आ गए हैं? क्योंकि वहां का साइंटिफिक पूल बहुत बड़ा है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो वैज्ञानिक है उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे कोई कठिनाई नहीं, लेकिन सुविधाओं के लिए सिर्फ वैज्ञानिक बनेगी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक का बहुत बड़ा रोल है। अब आप कल्पना करके देखो, हिंदुस्तान में 3 बड़ी IT कंपनी है, एक इन्फोसिस है, एक विप्रो है, एक TCS है। इन 3 बड़ी IT कंपनियों ने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर तक को ऐसे काम में लगा रखा है जो 12वीं पास कर सकता है। 12वीं के बाद अगर मैंने किसी लैंग्वेज की या किसी ERP या किसी और हार्डवेयर का स्किल डेवलप किया, आई कैन डू द सेम जॉब जो एक IIT का इंजीनियर करता है। तो मुझे व्हाइट कॉलर छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे देश का विकास करना है। आज हिंदुस्तान में आप कल्पना करके देखिए, मैं आपको कुछ बातें ध्यान में कराता हूं। आज हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया कि हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम आज बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं ऑटोमोबाइल के, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं हम फार्मा के, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं हम IT के, और अभी हम सैटेलाइट लॉन्च में भी दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। 100 से ऊपर सैटेलाइट एक समय में लॉन्च करने वाला देश सिर्फ भारत ही है। क्रायोजेनिक इंजन हमने डेवलप किया, लेकिन चुनौती आती तब डेवलप करते हैं। सुपर कंप्यूटर जब चुनौती आती तभी हमने परम कंप्यूटर डेवलप किया। इसलिए हम चुनौती आए तभी काम करना है, ऐसा ना मान के बगैर चुनौती को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग उठाएं। और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं या BRC के साइंटिस्ट हैं या अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के जो लोग काम करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को भी, मैं समझता हूं देश की कम से कम पहले 10, 15, 20 यूनिवर्सिटी में अगर नाम आ जाता है, ये दुर्भाग्य ही है कि दुनिया में भारत के किसी भी संस्थान का नाम, किसी विश्वविद्यालय का नाम, किसी यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया के 100 नंबर 1 के विश्वविद्यालय में नहीं है, 200 में तो आता है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से हमारा और साइंटिफिक वर्ल्ड, हमारा एकेडमिक वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, और जैसे आप लोगों ने WIS ने ये सेमिनार किए हैं, ये कार्निवल किए हैं, इन सब कार्निवल से, सेमिनारों से प्रोत्साहित होकर हमारा स्टूडेंट इन चुनौतियों को स्वीकार करेगा। हमारे संस्थान जो हैं, इनमें से भी कोई स्टैनफोर्ड और कोई हार्वर्ड और कोई MIT बनेगा, कोई ऑक्सफोर्ड बनेगा, और एक नहीं अनेकों बन सकते हैं। और जब अनेकों बनेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारा साइंटिफिक पूल और साइंटिफिक टैलेंट और उसका आउटपुट, उसके रिपोर्ट, उसके थीसिस से देश जो है जिस प्रकार हमारा और समृद्ध हो जाएगा, दुनिया फिर हमारे को कहेगी यहाँ पर भारत में ज्ञान विज्ञान की उज्जवल परंपरा है। भारत ने दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया है और आगे भी देगा। और भारत ने हमेशा जब ज्ञान विज्ञान डेवलप किया है तो ओपन फील्ड में रखा है, हमने कोई पेटेंट नहीं कराया। लेकिन आज पेटेंट की आवश्यकता है, आज कॉपीराइट की आवश्यकता है, IPR की आवश्यकता है। तो हमारा जिस प्रकार का ज्ञान विज्ञान समृद्ध होगा, इंटेलेक्चुअल राइट्स उतने ही, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी उतने ही समृद्ध होंगे। ऐसा एक विचार करिए, और विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ संकल्प करेंगे। जैसे मैंने कहा और स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन में जो अचीव करता है वो एक लक्ष्य की ओर टारगेटेड होता है, और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है, सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। ऐसा संकल्प हमारे छात्र छात्राएं अगर करेंगी तो निश्चित रूप से और हमारा देश आने वाले समय में समृद्ध होगा और दुनिया के पहले 2, 3, 4 देशों में हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो सामान्य व्यक्ति है उसको रोटी कपड़ा और मकान की कभी असुविधा नहीं होगी। चिकित्सा के साधन उपलब्ध होंगे, शिक्षा उपलब्ध होगी और अच्छी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होगी। लेकिन इसका आधार बंधु आप और हम हैं। आप और हम इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़े,
इसी बात के लिए आप सबको पुनः धन्यवाद, और आपने ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए भी धन्यवाद, और मेरा गला कुछ बीच में खराब हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नमस्कार। Thank you very much, sir. Now the house is open for discussion. If anyone wants to interact with Dr. Shri Krishnapal ji, you can discuss. Yes, from the participants. Okay. Yes, please. Thank you very much, sir, for delivering such a thought-provoking talk. I am highly impressed by listening to you, sir. You have delivered a very informative lecture. You emphasized the contribution of Indian intellectuals in the development of our country in different fields like medicine, atomic research, space science, etc. You reminded us all the golden period of India, like the time of Maurya Kal, etc. You also cited a number of Indian-born personalities heading a number of world-level companies. But along with all these achievements of Indian people, you also try to pay attention of all Indians to pay our attention to the need of quality of education along with the number of universities and colleges which are being opened in the country. The need to produce more skilled persons, people not just having the degree but also technically strong. You also emphasized on the need to produce job creators, not the job seekers. You have also emphasized on the need of the moral values and the capabilities present in a person to face the social, economical, or the other hurdles faced in the society. So, by listening to you, sir, I am sure that all the participants and all the people present in this meeting, they will be highly benefited by your lecture, by your experience, and everybody will try to contribute to the development of our nation. Thank you very much, sir. Thank you so much for being with us. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उर्मिला जी, जरा मीत मोहन सर जो है कुछ पूछना चाह रहे थे, इफ इट इज अलाउड। ओके, यस मैम, प्लीज। अमित मोहन जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर क्योंकि मैं केमिस्ट्री से ही संबंधित हूँ, यहीं से मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री में पीएचडी किया, तो मेरा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आप कौन सा पॉलीमर यूज कर रहे हैं जिससे फ्लूइडिटी पेट्रोलियम उसके पाइप के अंदर इंक्रीज हो रहा है। आप कल्पना करके देखो कौन सा पॉलीमर हो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट और गीगा में हो सकता है, गीगा में हो सकता है। आप कल्पना करके देखो। और हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट हैं आईआईटी दिल्ली के, बेसिकली क्या है ये पॉलीथीन बेस पॉलीमर्स है, लेकिन इसको बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत लेवल में पॉलीमराइज करना पड़ता है और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिग्रेड होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पंप डिस्चार्ज में इंजेक्ट करते हैं। तो ऐसा है ये। दुनिया में 3-4 कंपनी बनाती हैं, एक हम बनाते हैं हमारे उपयोग के लिए। तो इट मींस हाईली पॉलीमराइज्ड पॉलीथीन्स। हाँ, हाईली, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। मिलियंस में नहीं है सर, मिलियंस में है। सर इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक है क्या इसमें? स्पेशल रिएक्टर, स्पेशल टेक्निक, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट। यस प्लीज। आपको कभी रुचि हो तो हमारे यहाँ एक इंडियन ऑयल का एक रिसर्च संस्थान है, वहाँ जो कंसर्न है उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। पॉलीमर ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है हमारे पास। हाँ जी सर, मैं चाहूँगा क्योंकि मैंने तो अभी तक माइक्रोटिकुलर पॉलीमर्स के ऊपर तो काम किया है, लेकिन इस टाइप के लेवल्स में मैंने काम नहीं किया था ड्यूरिंग। सर हमारे को आप कल्पना करके देखो 10 साल लगे इस प्रकार के पॉलीमर को सिंथेसाइज करने में। सिंथेसाइज किया हमने, लेकिन उसके बाद अनेक बार हमने टेस्टिंग किया और फेल हुए। अल्टीमेटली नाउ वी कुड सक्सीड। हमारी प्रॉब्लम इसमें क्या है सर, देखिए ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन प्रॉब्लम क्या है,
जैसे इस पॉलीमर को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डालते हैं, Yes. और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जब डिग्रेड होके इसके ट्रेस ही रह जाते हैं, अब मान लो इसको एविएशन टरबाइन फ्यूल में डाला, मान लो हवाई जहाज के फ्यूल में डाल दिया, हाँ जी। और वो जो ट्रेसेस में रह जाते हैं तो वो हवाई जहाज के फिल्टर को चोक करता है, वो रहने नहीं चाहिए। तो बड़े स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशन है इसके। जनरल डीजल में डालते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरो में डालो कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल में डालो कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल हमारी प्रॉब्लम होती है एटीएफ की। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं काम करते करते, आप तो अनुभवी हैं। हाँ जी, यस प्लीज। थैंक यू सर। थैंक्स वेरी मच सर। सर एक रिक्वेस्ट जरूर है, मैं डॉक्टर उर्मिला, इतना इंटरेस्टिंग सर का लेक्चर था और इतना मोटिवेटिंग था सर। एक बार हम अपने स्पेसिफिकली ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स भी हम आपको एक बार जरूर कष्ट देंगे कि आप उनको भी मोटिवेट कीजिए, सो दैट जो हमारा बेसिक रिसर्च है उसकी बजाय वो अप्लाइड साइंसेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और नेशन बिल्डिंग में अपना सपोर्ट दें। क्योंकि जेआरएफ में एक बच्चे को 20 लाख जो है वो खर्च करता है नेशन, तो उसके लिए हम एक बार फिर आपको जरूर कष्ट देने की देंगे। आपका जब भी समय होगा मैं आपसे फिर बाद में कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। Now I can leave? Yes, sir. Now you're. Thank you so much for being with us. Now our event of science storytelling that the MSc students or the other department students, if you in this event as a listener, you may. If you are meeting, you may. All the participants from the schools which in this event this event. I welcome you, ma'am and sir, for judging this event today. Thank you, ma'am. Thank you, Doctor. Dr. Suman Mehendia. Yes, ma'am, I'm here only. Ma'am, you will you please coordinate with judges now? Yes. Dr. Meenakshi and Dr. Hardeep, we will send you the list of the participants, and we have just given them a journal information, journal instructions to carry out their story. We are just giving them 5 minutes, 3 to 5 minutes to complete their story. Any language they want to prefer, either Hindi or English, they can, and they are allowed to use any prop. And also, if they want to share their screen, want to use the whiteboard or use any of the prop on the board also by writing anything, they can do. So based on their performance, based on that and the criteria, it's better you both are the judges, you discuss and finalize how will you evaluate. And for this we have the 3 positions, first, second and third, and 1 consolation if any, if you find it. So mainly school students from different public schools and government schools are participating. 24 students are registered with us. I will send you on a WhatsApp the list that we have made for the registered student, and just mark their by asking their name, you can just mark them who is coming first or second, third, and fourth, and so on up to the serial number of 24. So I'm sending you, and then you can continue for that. For any assistance, Dr. Urmila and Dr. Hardeep Rai Sharma are with us, are with you. Suman ma'am, I have already shared the list of participants with judges. Okay, you already shared now. We have received, madam. We have received. Yes. So basically, just I'll tell you or brief you about the theme.
that storytelling competition that we are giving. Ma'am, have you told about the themes, particular themes? No, ma'am. Okay, You may just a continue. moment. Just Yes. a moment, sir. I'm just open the file. मैं भी एक बार कर रही हूँ, आप क्लिप फोटो खींच लेना, मैं भी. I'm just sharing my screen and will show you the kind of topics we have finalizes, and from these topics they have to choose one of the topic. So broad topic we have provided, and it's up to their choice only. They can so sir, we have the broad theme of clean and green. I'm just copy and paste first. So these are the theme: clean and green energy, food safety, health or medicine, sustainable environment, energy harvesting and storage, women in STEM. STEM belongs to science, technology, engineering, mathematics, artificial intelligence, Internet of Things for science and technology, Indian contributor in science and their work. So these are the broad topic. They can choose the topic as it is, or the subtopics belonging to these broad themes. So it's up to the choice for the students. So they have prepared their science story, and for 3 to 5 minutes maximum, any language being preferred by them, they can use any prob, or they, if they want to use the whiteboard, if they want to use any ppt, anything they can they are allowed to do that. So I think participants, those have been there. If you are having any query, please ask before we are going to start in a few minutes. Madam, one more thing is there. Yes, sir, please. Uh, Before starting the event, before starting the story, the participant must inform the judges that on which subject he choose, Yes. which topic he is going to explain the story. Yeah, brief introduction about that, the name and the About the school theme, they are yes. they belong, and the topic or the theme they have been covering. Yes, thank you, ma'am. All the best to the students. So Hardeep sir and Meenakshi ma'am, it's up to you now to just and we are with you. Me, Dr. Okay, Hardeep, thanks. and Dr. Rumila will assist you during that program. So as per the registration, first we are having Miss Samriddhi from Millennium School. Miss Samriddhi, are you there? Yes, ma'am. So please, okay, you are being corresponding from Preeti Bali. Okay, Yes, fine. ma'am. So Dr. Meenakshi and Dr. Hardeep, shall we start with the first contestant? Yes, madam, we can. Okay. Samriddhi, please carry on, and best of luck. Thank you. Good morning, everyone. Today, I, Samriddhi, a student in the Millennium School Kurukshetra of Class 10, is going to present a story in front of you on the topic Indian scientists and their contribution. So, one fine day, a science teacher of class 2nd took the children to the garden for some experiments. There, he saw that children were uprooting the plants and plucking their leaves and flowers. This teacher then felt the need for an interactive way of stopping them. Even if he'll stop them here, they might do the same thing somewhere else.
So he asked all the children to gather in the sitting spot of the garden. There, he told them a story of a young boy who used to think and act just the way they do. So one day, his best friend told him a story about plants that they used to talk. This young boy was astonished and was very curious about it. He started analyzing the plants then. After completing his schooling, he went to Cambridge for his graduation. There, he achieved a degree in biology and botany. After coming back to India, he started working as a teacher in a college for his living. During that time, India was under the strong grip of Britishers. He didn't get enough money, but he was not able to teach the kids, and then he asked the Britishers to treat everybody equally, to pay the Indian teachers and the British teachers equally. He even refused to take any salary for almost 3 years. During that time, he continued on his research, but due to shortage of money, he sold his home and went to a village and started living there. He eventually found that plants are alive. Yes, you heard it correct. Plants are alive. They have a pulse. He also invented a device that measured the pulse of plants called crescograph. So one day he took bromide, that's a poison, and injected that in one plant. After some time, the plant died, and he observed that this poison has same effect on humans and plants. So he wanted everybody to see this. So he called all the other Indian scientists in a ground and showed them this experiment. He did the same process there, but this time the plant didn't die. He was very confused that why is it not working. He was sure that his experiment was successful and the plants are living creatures. The crowd waited and waited for a long time. After that, the crowd became furious and started laughing on that man for his foolishness. But out of nowhere, a man came and said that he added water in that injection instead of poison. The man simply passed a smile to that man and continued the same process, this time with the poison. So the experiment was this time successful. Everybody praised that man. And do you know, kids, who that man was? Let me tell you. That man was none other than J.C. Bose, the only first Indian person to find out that plants are alive. So now, kids, I hope स्मृति that बेटा you have आपका learned. स्मृति बेटा आपका टाइम हो गया. टाइम इज ओवर. Very Sir? nicely you explained. Thank you, sir. But the time was from 3 to 5 minutes, and actually, my time is not yet completed in my Okay. stopwatch. Smriti, you just do it. So, Do it. Okay. okay, करिए बेटा, चलिए लीजिए. Start. So, You can kids, complete. now Okay. I hope you have learned your lesson. The kids, after listening to this story, promised and never ever did this thing, and instead they started planting and planting more and more trees. Thank you so much. Thank you, Beta. Very good. Thank you. Dr. Hardeep and Dr. Manakshi, shall we move to the next? Yes, Sure, ma'am. Dr. Suman, one more thing. Is paper reading or screen reading is allowed? Ma'am, actually, we cannot check right now ki they are been doing so. But something we have to convey to the student so that Yes, it is yes. easy for them also, and we as evaluator also. Actually, we have just given them a prior to prepare it. It's not on spot. So might be they have and they have just practice it more and more. So we cannot control right now, I think.
Okay. So basically, we are just focusing on the content and the how they have been expressing it. Okay. Next participant is Gurmukh from Geeta Niketan. Gurmukh, are you there? Yes, ma'am. Okay, please continue. All So right. your So, time start now. am I audible? Yes, you are. All right. So, the ball finally landing in my court. I would like to speak on the broad topic I've chosen, that is clean and green energy. And the subgenre that I'm using is the steps we have to take in order to accomplish it. I'll be speaking the story on behalf of James, an American patriot who lives in the era of 2122. I've used quite a few assumptions for the future. So, first of all, I would have to clarify all of those. Number one is petroleum and natural gas have been exhausted, and coal, as we're going to find out, is going to be exhausted in the duration of the story. Second is the newspapers has been phased out. So, starting with my story, here it begins. 31st of January 2020, 2122 started out as a normal day for me. As usual, I woke up early, got dressed, and left for the university on my electric bike. On reaching the university, I noticed that the normal, cheerful, ecstatic vibes of the place were just not there. I saw my friend Michael, a fellow whose glass was almost always half full, standing there waiting for me. Have you heard? He asked. To which my obvious reply was heard what, as I had forgotten to take my morning news brief over. He announced that coal has been exhausted. These words were such a thunderclap for me because it meant that the economy of the whole country was in danger. There were also not going to be weekend barbecues, but that was not the talk of the moment. That is not the core of the talk for the moment. Now, in such a tight time, we had to do something to help our country to to avoid being plummeted down to chaos. So, what I decided was to write my thesis of the PhD I was doing about this only. So, I chose the example of India and how it has avoided this catastrophe once knowing that the exhaustion of coal was inevitable. The main thing noticed was that India, on one hand, was flexible and kept changing to all the different alternatives to fuels available. It phased out petroleum and natural gas when it was close to its exhaustion, and finally, when the time of coal came, it had completely switched out to clean green energies like renewable sources. But by the time we were not so advanced to use completely fulfill our requirements on clean green energy renewable sources, we had used nuclear source as an alternative. Moving onwards, today, as I'm speaking this in front of everyone, standing in front of the paparazzis and the media reporters, I my thesis has been a great success because of how much attention it was given and how much true to the facts it was. Finally, we after 5 years we have come out of the worldwide we had found ourselves in, completely phasing out coal and natural gas and carrying out forward. Where there's a will, there's a way, and even after being in the hardest of the times, hard work and perseverance can save us from our darkest times. Thank you and have a nice day. Participants, it has been requested to you to please focus on the camera. It doesn't seem, although we know already, Dr. Meenakshi told you that are the paper reading or screen reading is allowed or not. Okay, so you know and we know we cannot control it. Okay, but
this is your competition. You have to peculiarly face the camera so that it seems that you are been interacting with us. Means it's a storytelling. You should be interacting completely, being involved with us. It should be seems like that. Okay, so be take care of that. So moving to the third participant, Nitin Chauhan from Maharana Pratap Public School. Nitin Chauhan. Okay, I think Nitin. Okay, maybe he's not present. Then there is another participant from the Maharana Pratap School itself, Lisa Chaudhary. Lisa Chaudhary. I'm giving the last call to the Nitin and Lisa. Nitin Chauhan and Lisa Chaudhary from Maharana Pratap Public School. Okay, there seems to be absent. So next is Avika, the Millennium School, from the Millennium School. Avika. Avika from Millennium School. Excuse me, ma'am. Yes, Samriddhi. Ma'am, Avika will not be participating. Instead, we have another participant. Okay. From your school, but Yes, ma'am. did that participant registered? Yes, ma'am, but she has now registered for poster making. Okay. Actually, by mistake, she registered for storytelling. She is in poster making. For Avika. Yes, ma'am. And what about the another student you have been talking about? Yes, ma'am, he is in the meeting only. Aditya Gupta. I just want, okay, Aditya Gupta. Okay, Samriddhi, we will come to the next time again. Okay. Thereafter, Avika, Sir Dr. Meenakshi and Dr. Hardeep, please mark them as absent. Nitin, Lisa, and Avika, serial number 3, 4, and 5. Moving to the next, Pragya Pandey from Geeta Niketan. Yes, ma'am. Okay, Pragya. Aditya, we will come to your turn when your turn will come as per the serial number. Okay? Yes, ma'am. Wait for that time. Okay, Pragya, just give your brief introduction in a few seconds and continue. Yes, ma'am. Honorable judges, respected teachers, and my dear friends, a very good afternoon to all of you. My name is Pragya Pandey, and I am student of class 12th in Geeta Niketan Avasiya Vidyalay, Kurukshetra. The topic of my story is Woman is King. प्रज्ञा बेटा आपका ना फेस विजिबल नहीं है. आप सारे तो दिखाई दे रहे, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा बेटा. थोड़ा कैमरा सेट करेंगे क्या? Yes, sir. Yes. हाँ, थोड़ा फेस अपवर्ड में कट रहा है. So come little. हाँ. Ma'am, should I start from starting? No. Start from your just story. Okay, ma'am. So today I'm going to tell you a story about a superwoman. For that story, we have to go in 1960. On 15th October 1960, in Dharwad, Karnataka, an inspiration was born. Yes, she is an inspiration for thousands of girls. She had a strong willpower since childhood, and she was ready to fight from the whole world to achieve her dream. And do you know what was her dream? Her dream was to become an army doctor. Some of you might have guessed about her. I'm talking about none other than Lieutenant General Dr. Madhuri Kanitkar, the first woman pediatrician to reach the second highest rank in Indian Army. But she didn't get this success so easily. She had to struggle a lot. When she expressed her wish to become an army doctor in front of her parents, her father refused. It was not because he was against his daughter's studies, but he didn't want to send her daughter to army because he used to think that army is not safe for girls. So he didn't want to risk his daughter's life. But his decision was not so strong in front of his daughter's wish to serve the country. So finally, in 1978, Madhuri managed to get admission in Armed Force Medical College
Pune. There were only 20 girls and hundreds of boys in her batch. But she shone like Kohinoor in Diamond's mind. Because of her excellent academic and extracurricular activities performance, she got President's Gold Award and Kalinga Award. When first time she went to field, everyone was looking at her in confusion because they have never seen a female doctor in the field. She was also advised to stay in the mess, but she refused the offer by saying that if the other officers are staying in tent, then I'm not the special one to stay in the mess. She even served as Dean of Armed Forces Medical College for 2 years. Nowadays, she is Vice Chancellor in Maharashtra University of Health and Sciences, Nasik. From the story of this superwoman, we can learn that if we really want to achieve a goal, then whatever the situation may come, we should stick to it and achieve it. And at last, I want to say the few lines of Swami Vivekananda: arise, awake, and stop not until the goal is reached. Thank you very much. Thank you, Pragya. Very well done. Next, Samriddhi again. Ma'am, Samriddhi repeat हो रहा है serial number 7 पे भी. So we move to the serial number 8. Aditya Gupta from Millennium School, Kurukshetra. Aditya. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Aditya, please continue. Your time start from We don't have 12:20. Samriddhi. Samriddhi sir, don't have serial number Samriddhi. 1 pe I think she registered 2 times. Okay. Good morning, all of you. My name is Aditya Gupta, and today my topic is futuristic AI. This story is named The Story of Humankind as I Perceive It. I have completed my first 13 years on this earth, the one called Nowhere. Nowhere has literally just 4 things: food, water, air, and human history books. This is all that is needed to prepare us for our very special day, the day of the decision. All such a drama. From these history books, all that I have ever been able to infer is that if we trace the bloodline of all of my species back to the 21st century, my ancestors were wealthy people. They had an abundance of all sorts of resources. Although they had just one earth, yet they were rich. Times and hardships have brought us to this world, which, as taught to me, is worse than the one that was. We now have 3 earths, but all of them completely isolated. Just this strand of business has kept us connected right now. The business of oxygen is the biggest business as per now. These 400 years have brought us to a place of great technology and complete individuality. We have even been able to stop time in many small rooms, which are also the portals to all the 3 earths. I have to visit one such room now, as today is my day of decision. I confront 3 doors, all saying the names of the 3 earths: AI, VR, and Nowhere. I had never considered what earth would I like to reside on. All these earths were made by the continuous and diligent efforts of the robots. AI, when humans had resources, stood for artificial intelligence. Now it is a mini earth. About 250 years back, humankind split up, and a pact between these 2 groups allowed one section to make other planets for themselves and not interfere in the matters of the earth dwellers. But the interpretation of the other section also allowed them to use the resources of the earth to make other planets. By this interpretation, they used up all of our resources, leaving us to nowhere. The pact also defined the way of selection. It said that as soon as a child enters his teenage, it is a choice of only him about which earth will he live on. To decide, he can have infinite time, which will not cost him any age.
I sit in this room where time is not, and it is just a game of three doors. So I sit, I keep thinking, roaming in infinite time. I take up the perceptions I have about these worlds so as to decide the best. VR is an open book. It is known to us. VR stands for virtual reality and it is the opposite of nowhere. You can live your reality. Whatever you want can be your reality. You can live any of your fantasies. It would be a problem free life in a virtual bubble. Most of the citizens of VR are happy, but there are serious drawbacks. First, being monotony, as you will never meet any real new people in your life. And the second, being an early death. The best of the best can barely touch the age of 35. I would not like an early death though. AI has always been a mystery land to us, nowhereers. On my current Earth, it is said to be the only reason of the humankind's ultimate breakup. One of the sections of the people wanted to give control of the human chariot to robots. They said it would bring ease to the human life. But the others knew that it could bring nothing but destruction. So I still sit here, intrigued by the question, what did robots do? Thank you. Thank you, So Aditya. it is requested to the participants, please stick to the time, 3 to 5 minutes. If you exceed the time, then you may lose points, right? Madam, please continue. Okay, next participant is Anshuman from University Senior Model School. Anshuman. Anshuman from University Senior Model School. Okay. Next is Misbah Naz, University Senior Secondary School. Ma'am, they are in poster making, Anshuman and Misbah. I think we are getting their name to be registered in storytelling competition. They have filled this form also, I think. Okay. So moving to the next serial number, sir, 11, Riddhima BR International Public School. Riddhima. Good morning, ma'am. Ma'am, I am audible. Yes, Riddhima, you are audible. Please continue. A very fresh good morning to respected judges. This is Ridhima from BR International Public School of class 10th. I am telling you the short story about the topic of Indian contributor in science and their work. This story is about some famous scientist. As you know, not every scientist has a breezy start to his career, and these stories of struggle are just as the story of the success. A story told through me on this storytelling competition. Let's get started. India is the land where numerous brilliant brains have made contribution in the field of science and technology, and hence the position of around the globe. India is the second largest group of the scientists and engineers in the world. India is a land where numerous brilliant scientists. Let's get started with the Raman from C.V. Raman to Salim Ali, the talent of the Indian scientist and inventor. Starting from the APJ Abdul Kalam, 11th President of India, the critical role of the nuclear atom energy and the India missile, Raj Reddy for his work related large scale of artificial intelligence system, Salim Ali, the Birdman of India, S.S. Abhyankar, mathematician from outstanding contribution of algebraic geometry, Prafulla Chandra Roy, famous chemist known for the pharmacy of the first pharmaceutical company. From the C.V. Raman, he was honored with the prestigious award of his pioneering work of scattering light. In India, our role models usually cricketers or film stars. No doubt they achieve from the extraordinary things or through their hard work and determination. However,
we all agree to the two unsung heroes of our country have been our scientists. Their contribution toward the nation building is immense. It's launching 104 satellite in a one day and Mangalyaan satellite in a first attempt. The great scientist APJ Abdul Kalam says, a dream is not that which you see while sleeping. It's something that does not let you sleep. Thank you. Have a nice day. Thank you. And I'm again giving you the instructions that your competition is based on the script, the content of the script, and how you are presenting. And again, I'm giving you the instructions that it should not be seems like that you are reading any page or like screen. You can use the prop, but it should not be seems like you are being just as reading. So moving to the next participant is Jasmine Sandhu from Wisdom World School. Jasmine, Jasmine Sandhu. Ma'am, am I audible? Okay. Yes, you are audible. Okay. Please, Jasmine, start. Namaste everyone. I am Jasmine Sandhu from Wisdom World School. I study in 9th Kaveri and today I'm going to say my story on the topic AI or artificial intelligence. My story name is Friends with AI, Friends for AI. Being two friends is a normal thing. We all have friends who tease and teaches us a lot. So here are two friends who have things to share about artificial intelligence. Jin and Namjoon have been best of buddies since their childhood. If you go to the library or museum, you will definitely get to see them both together talking about technology and science. It was the day of Sunday when Jin got sudden confusion about the concept he was reading. So he rushed to Namjoon to clarify his sudden doubt. Namjoon was reading his book peacefully until Jin came to Namjoon and said in a very sad tone, June, I'm not able to understand how this technology is working. Like, we all use smartphones along with the internet. How is that even possible, buddy? These apps and devices are becoming secret agents who can tell that what we are asking about. I feel like there is stalker behind these devices. Namjoon was looking at his friend with the magical ease and waited for Jin to complete his serious yet fearful speech. After listening to his fearful speech, he responds, Oh, buddy, come on, and come and sit here. Let me tell you what is it. Jin sat on the chair and listened to his friend curiously. These all things are happening because of artificial intelligence, or we can say AI. Namjoon spoke. What is AI? Jin said. Buddy, the theory of development of computer system able to perform tasks normally requiring human intelligence such as speech recognition, decision making, translating in various languages is known as artificial intelligence. Jin was highly impressed with Namjoon's answer and asked more about AI. Oh, that's great. It is powerful, isn't it? Namjoon chuckled and said, Yes, buddy, it is. Then, buddy, does it have pros and cons too? Jin asked curiously. Yeah, it has the ability to perform faster than human speed. It has tons of real life application to make our daily lives earlier and simpler. But it can be quite expensive in some cases. Namjoon spoke with a deep voice. Buddy, mind telling me the application of AI? Jin asked with more curious. Yeah, sure, Jin. It is mostly found in topics ranging from robotics, medical service, finances, and many more. After a long time of discussion, Jin was quite impressed with his answers and gave him his soft yet peaceful smile to Namjoon. He thanked Namjoon and bid their goodbyes to each other. Today, artificial intelligence has been also included in education in schools so that the children could learn and create new things for a better world. Thank you. Beta, your name is Arya. Aira. Ma'am, my name is Jasmine. Okay, so both of you been presented from the same screen. The next is
Ira Gupta from Millennium, and Ma'am, it's Ira from Wisdom. from Wisdom. Yes, Wisdom. Sorry. Yes, ma'am. So actually, your name on the screen is been depicting Ira Gupta. Yes, ma'am. Ma'am, we both are from same school. Okay, okay, fine, fine. Yes. That I want to clarify. So next is Ira Gupta from Wisdom World School. Ira Gupta. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible, but I'm not able to see your Yes, camera. ma'am. Just Could a you second. on your camera, please? Namaste, ma'am. Namaste, everyone. My name is Ira, and I'm a student from grade 11th studying in Wisdom World School. Today, I will be telling a story depicting science awareness and science temperament related to the concept of pressure. Now, I've made some posters here. Can you see this? Yes, it's Yes. So, I will be sharing these posters in between my story. Yeah, So, sure. let me start my story. Once, there was a school called the Isaac Newton Government School. There were two children who used to go to the same school and they became friends at a very young age. They were Albert and Pascal. Now, these are not the students you might be thinking about. These are not the great scientists, but these are just two ordinary students whose parents might be a bit too interested in science to name their kids after such great scientists. Now, one day, while walking to school, Albert noticed that Pascal used to be so out of life, so tired. However, he himself remained very active. Pascal asks him, "Hey, why do you always remain so active? But look at me. I almost lose every ounce of energy that I have." Then Albert looked at him and said, maybe you need to eat more. You aren't even carrying any extra books, yet you feel so fragile." Then Pascal looked at him and said, yeah, as if you wouldn't just fly away with a puff of air. Then, when both of them reached their school, the teacher entered the class. Their first class was a physics lecture, in which the teacher told, "Good morning, students. Today, we will be learning about pressure. Pressure is the force applied per unit area in a particular body. Now, let's understand this through an example. What happens when you hammer a nail into the wall? The nail gets embedded into the wall. Now, what if we were to take a bowling pin instead of the nail? Obviously, it would not be possible for it to be embedded into the wall because the pointed end of the nail covers very less area on the wall, due to which the force we apply creates more pressure and the nail gets embedded into the wall. However, in the case of a bowling pin, the pressure we exert is less because it covers a larger area on the surface. Now, the teacher gave the students their homework and told them to complete their homework by writing a few daily life examples of pressure. Now, while reaching home, the two friends were talking, and then Albert said to Pascal, "Hey, did you enjoy today's physics lecture? It was so interesting. Less area means more pressure, and more area means less pressure." Now, I wonder what more examples we can write from real life. Breathing heavily and taking big whiffs of air, Pascal thought, "Why are you always remaining so energetic?" Then Albert asked him that why are you so tired? I always remain so energetic, yet you always get so tired even with the same amount of books. Then Albert remembered what they had learned in that day's physics class. Albert remembered that their teacher told that when the area is less, the pressure is more, and when the pressure is more, the area becomes less. Now, thinking about this, Albert suddenly said, "Oh, look, I got this. I just got it." Looking at him weirdly, Pascal said, "Oh my god, what are you so excited about?" Then Albert told him,
Look how your bag has really thin straps as compared to mine. These thin straps create less area over your shoulders, due to which you feel more pressure. And my border straps cover more area over my shoulders, due to which I feel less pressure even with the same amount of books. Pascal looked at him amazed and said, "Oh my god, so you mean that science we learn at school actually has applications in real life too?" Then both the friends, amazed, went to school and started talking about what more examples they could write for their homework. The two friends next day went to school together again. Next day was different. Next day, Pascal was not breathing heavily. Next day, he had changed his backpack to a new one with border straps. Looking at him, Albert said, "Hey, you should be thankful to me, you know. If I weren't there to guide your useless brain, you would have been crushed under the heavy weight of your backpack." Looking at him, defended, then Pascal said, "Oh, yeah, yeah, sure. As if you wouldn't just fly away with the thunderstorm last week." Both friends, astonished, went to home and found out that the science they learned at school was not only a subject they read, but also had its own unique applications in real life. Now, in the last, I would like to say that the English chemist Rosalind Franklin said no false in the statement that science and everyday life should not and cannot be ever separated. Now, in the end, I would like to show you my posters that I made. Thank you. Thank you, Ira. Moving to the next participant, Vanchika, Government Girls Senior Secondary School, Thanesar. Vanchika from Government Girls Senior Secondary School. Vanshika, please turn on your mic. Vanchika, your mic is off. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Now on your camera also and start. Yes, beta, start now. Good afternoon to all who are present in this call. I am Vanshika, student of class 90 from Government Girls Senior Secondary School. A long time back, in 1926, a family emigrated from Ireland to the USA. The family was not rich, in fact, they were jobless during the Depression. In the US, the father worked as a clothing labor organizer and the mother was an activist at the women's suffrage movement. In 1927, they gave birth to a boy named John. John was a child prodigy, so despite starting his schooling late due to child illness, he finished it early. While in school, he developed a deep interest in mathematics and joined BS program at Caltech with an intention of becoming a professor in mathematics. He graduated in 1948 and further moved on to pursue his master's. In 1951, he received his PhD in mathematics from Princeton, via Dartmouth and MIT. He became a full-time professor at Stanford in 1962, where he remained until his retirement. His research was ignited after attending a conference on cerebral mechanisms in behavior, and so began his quest to develop machines that could think like people. His research was based on an objective to explore ways to make a machine that could reason like a human, was capable of abstract thought, problem solving, and self improvement. He believed that every aspect of learning or any other feature of intelligence can, in principle, be so precisely described that a machine can be made to simulate it. Today, John McCarthy is known as the father of artificial intelligence, computer scientist pioneer, and inventor of artificial intelligence. He coined the term artificial intelligence in 1955 for the 1956 Artificial Intelligence at Dartmouth Conference.
Artificial intelligence will change the world. This phenomena is also referred to as the fourth industrial revolution. Niels J. Nielsen has provided a useful definition. This is artificial intelligence is that activity devoted to making machines intelligent, and intelligence is that quality that enables an entity to function appropriately and with foresight in its environment. But artificial intelligence is not a technology of the future, it is also around us today. Some examples including are products are recommended to you on Amazon, Flipkart, and other shopping sites. You listen to music on YouTube, and there will be listen to recommendation on the site. When you chat with customer support, you are actually chatting with chatbots. That's our artificial intelligence. When you ask your Amazon Echo to change your playlist, that is also artificial intelligence. But these are only humble beginnings of artificial intelligence, and there's much more to come. Analysts believe that one day artificial intelligence technology could be your lawyer, accountant, and also your doctor. But how can a machine recreate the technical human expertise acquired over the many years, where accuracy and safety are critical matters? Can we confidently rely on robots? So the answers are that companies like Google, Amazon, IBM, Microsoft, and other emerging companies are investing millions of dollars to make this phenomena work and to thank you. Thank you. Moving to the next participant at the serial number 15, Prakriti from University Senior Secondary Model School. Prakriti from University Senior Secondary Model School. Ma'am, present here. Ma'am, let me set up the camera first. Okay, sure, baby. मैम ये सेटअप कैसे होगा मैम ये मेरा थोड़ा बड़ा है Am I audible, ma'am? Yes, you are audible, beta. Continue. Greetings to everyone. I am Prakriti, a student of class 10th in University Senior Secondary Model School. My topic is clean and green energy. In this story, an old man tells about his life experience to his granddaughter and also tells about the importance of energy resources to us. It was a bright sunny day. Birds were chirping, butterfly was dancing in the sky. A cute little girl was playing around in a park with her grandfather. She joyfully exclaimed, Grandpa, even in the 25th century, our earth is so beautiful, right? Her grandfather smiled warmly and said, You are right, my child. But it was not like that before. What do you mean, Grandpa? She asked cluelessly. He said, Come, let me tell you a story about it. It was a time when there was no sunlight and no electricity present on the earth. Only darkness and pollution scattered everywhere. We all thought that our end of life is written in the year 2375. Then how did you overcome that situation, Grandpa? His granddaughter asked him. He looked up in the sky, in the bright blue sky, and answered her, a scientist who wanted to save lives of many people decided to find a way to come out through it. He found a way to produce electricity from pollution and successfully developed a machine for it. After so many times, the pollution decreased and energy increased. We all were able to see the sunlight again. Solar panels were installed in each and every house in order to produce more electricity. The girl interrupted and said, I know about them. Solar panels are the instrument that are used to save solar energy, right? Bingo, the grandfather said. She exclaimed, then
everyone lived happily again, right? Grandfather said, no, it was not like that. Whenever a human gets anything without his own hard work, he always misuses it. People did the same. Old man took a break and continued. The scientist became a popular man and an interview was held for him. In that interview, he made everyone realize their mistake. He said, if we had ever saved the energy in the first place, then the situation would never have been happened. Everyone realized their mistake and decided not to use excessive energy. Her grandfather looked at her and asked, now tell me, what did you learn from the story? She said, I learned that we should save our energy resources and should not misuse them. Good, exclaimed her grandfather. Now let's go, it's being late. In this story, we came across to the importance of renewable energy resources. So let us take a step to save them as we don't want to face that situation in our future. Thank you. Very well done, beta. Next is Purvanshi from University Senior Secondary School. Purvanshi. Purvanshi. Is Purvanshi is present here or not? So moving to the next, Himangshi from the same school, University Senior He's here, I Secondary think Purvanshi is here. Okay, Purvanshi is there. Okay, Purvanshi, please carry on. Yes, ma'am. Purvanshi, we are not getting your voice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Excuse me, ma'am. Yes. Good morning, everyone, respected judges, and all other participants. No, I think there is some technical problem from your side. Your mic connection is seems to be loose. Maybe the lead you are using for your mic and earphone. Am I audible now? Yes, you are audible now. Okay. Good afternoon, everyone, respected judges and all other participants. I am Purvanshi, a student of 12th standard from University Senior Secondary Model School. इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है, मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई है। हम ही से नाता है जीवों का जो धरा से जाएंगे, हम ही से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा पर आएंगे। My topic for today's storytelling competition is sustainable environment. So my story begins with a student Priya, who was very curious girl. She always kept busy in solving fishy things. She had a smart watch which can sense from environment and replied according to the situation. One morning when she was ordering something, she suddenly said that this product would make so much easier to solve all the world's problems. Then her watch sensed her voice and replied, the world definitely needs some fixing. Did you know that first generation can end poverty and the last one can stop climate change? After this, when she was on her way to the school, her eyes caught something fishy. It was a man who was finding some electronic materials from the garbage. Her watch sensed it and replied, there is a good citizen. He knows how important it is to recycle used electronics from the dangerous environment pollutants. But she was confused that she was stealing, not recycling. So she followed that person and found that
he sold that used electronic to the recycling authority. It was still weird for her to see that someone was paying for garbage. Still, she was not convinced, so she started exploring the area and reached inside the ship, and more precisely within the garbage in that ship. As the garbage all around, she couldn't control herself and vomited outside the window. To her surprise, it was sea and a lot of ships and fishing boats all around. When that ship in which she was traveling reached to the coast, she found that they burnt garbage in the middle of the city. Her watch sensed her voice and corrected her that more often than not, it is the children of poorest people who have to sort and burn the garbage, which is dangerous for their health. After that, she jumped in the truck which was going to the factory. On her way, she saw trees and said that at least they were planting new trees. Her watch sensed her voice and replied, industrial farming has its own downsides, like pesticides, overuse of water, and heavy machineries can be tough on local wildlife and the local peoples. After that, she entered in the factory and got some equipments like other workers having and started observing her surroundings. When the supervisor noticed her, she quickly rushed to the workers' crowd and then hid in a carton made of wood. That wooden carton was ready for the delivery and she was traveling into it. When that carton delivered, she came out from it to check out, and to her surprise, it was her own house. Then she checked the carton again. It was the same product inside the carton which she had ordered initially. So, through this story, I wanted to grab your attention to the topic of sustainable environment. In this story, we can see the sustainable habits, like the final product was made through the recycling of used electronic material. But at the same time, we can see the burning of garbage and downfalls of industrial farming. So we can say that yeah, we are approaching to the sustainable habits, but not in its true sense. There is a popular saying that the resources which we use in present is not gifted by our forefathers, but we have borrowed it from our future generations. So this is our responsibility to use the resources wisely and sustainably. Thank you. Thank you, Purvanchi. Moving to the next contestant, serial number 17, Himangshi from University Senior Secondary Model School. Himangshi. Yes, ma'am. Okay, Himangshi. And I am audible? Yes, you are audible. Good afternoon, everyone. Honorable judges, respected teachers, and my dear friends, I am Himakshi of 11th Standard from University Senior Secondary Model School. So, आज मैं आप सभी को साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक मजेदार स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. आई होप कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और आप सभी को बहुत मजा आएगा सुनते हुए. तो मेरी स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, नेम काजल, मोहित, सिमरन एंड आदित्य. तो जो सभी चारों बच्चे हैं वो क्लासमेट्स भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. तो वो सभी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं पैंडेमिक के कारण स्कूल बीच में बंद हो रहे हैं, तो वो सभी बहुत दिनों बाद मिले हैं. तो जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो समझ सकते हैं जब आप स्कूल खुलने के बाद इतने दिनों बाद मिले होंगे अपने फ्रेंड से, तो आपको कैसा लगा होगा. तो वैसे ये चारों दोस्त बहुत खुश हैं कि आज हम अपने फ्रेंड से मिले हैं. तो इनके पास बहुत सारी बातें हैं कहने को और सुनने को. तो जो हमारी काजल है वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. तो वो कहती है, दोस्तों क्या तुमने कभी सोचा था कि जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है इससे पहले कभी हम घर पर बैठे इतने लोगों से बात कर पाएंगे, वो भी एक ही टाइम पर. तो सिमरन कहती है ये तो टेक्नोलॉजी और साइंस का कमाल है. तो बीच में ही आदित्य कहता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये तो मैजिकल पावर्स की तरह है कि एक ही बटन दबाओ और सारा काम पूरा. तो तभी मोहित कहता है कि भी जो फिर तो तुम्हें ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ताकि तुम इन सभी जादुई शक्तियों से नए नए जादू कर सको. तो वो सभी ना इस बात पे हंसने लगते हैं क्योंकि जो आदित्य है ना वो बहुत ही कमजोर है थोड़ा सा पढ़ाई में. तो तभी जो आदित्य वो कहता है, दोस्तों जब भी मैं कोई खाने की चीज देखता हूँ ना टीवी पे, मुझे तो ना बहुत इच्छा होती है कि काश मैं उसको टेस्ट कर सकता. तो ना सिमरन कहती है, दोस्तों मेरा भी कुछ यही हाल है. तो तभी काजल कहती है, दोस्तों फिर तो
तुम्हारी भगवान ने सुन ली है, क्योंकि जापान में एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ऐसा टीवी डेवलप किया जिसमें से जो भी हमारी स्क्रीन पर होगा उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो मोहित कहता है ये तो बहुत ही ना मजे की बात है हम सभी बच्चों के लिए, कि भी तो सभी दोस्त इस बात पर खुश हो जाते हैं, तो सभी के चेहरे पर तो खुशी होती है और मुंह में पानी। तो तभी ना आदित्य कहता है कि भी दोस्तों एक दिन तुम जरूर देखना कि भी मैं ना साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ना हवा में उड़ूंगा। तो मोहित कहता है हाँ जरूर दोस्त, तुम्हारा ये सपना भविष्य में जरूर पूरा होगा। तो तभी सिमरन कहती है फिर तो आने वाले टाइम में ना आसमान में पक्षियों से ज्यादा तो ना लोग ही उड़ते हुए नजर आएंगे। तो तभी काजल के दिमाग में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना एक बात आती है, उसके दिमाग में ख्याल आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वो अपने दोस्तों को समझाती है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। कि तो वो कहती है कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू डू द टास्क विच कैन बी डू विद द हेल्प ऑफ आवर इंटेलिजेंस। तो बताती है कि आने वाले समय में रोबोट्स जो हम बना रहे हैं धीरे धीरे वो भी हमारी तरह इमोशंस को फील कर सकेंगे, हमारे साथ खेल सकेंगे, जो हम अभी कर भी रहे हैं। तो तभी ना जो मोहित है ना उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में, जो उसको वो बताते हैं अपने दोस्तों को कि इसको वो इंटरेस्ट ना डोरेमोन नामक शो देख के आया था। तो आप में से भी कुछ हैं जिनको ये इंटरेस्ट डोरेमोन शो से आया है। तो तभी सिमरन कहती है फिर तो आने वाले टाइम में ना सभी के घरों में ना एक एक रोबोट जरूर दिखेंगे और वो सारे काम वो कर पाएंगे जो भी हम कर सकते हैं। तो तभी जो ना आदित्य कहता है फिर तो लगता है हमारे घरों में मम्मी की तरह ना रोबोट भी हमें डांटने में ना शामिल हो जाएंगे। तो तभी काजल कहती है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाइफ को बहुत ज्यादा हम पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, आज वो हम कर सकते हैं। जैसे उसने अभी एक एग्जांपल दिया कि उसने कल परसों ही अखबार में पढ़ा था, अपने दोस्तों को बता रही है कि भी उसने ऐसा पढ़ा था कि जापान में ना एक ऐसी ड्रेस बनाई गई है जो ना अपने आप ना अपने कलर को चेंज कर सकती है, अपने आप ही अपने कलर को चेंज कर सकती है। तो ये तो वो कहती है लड़कियों को अब नई नई ना ड्रेस भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चल जाएगा। तो ये सुन के सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। तो तभी सिमरन कहती है इस साइंस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जो इमेजिनेशन है ना उसी को हमारी रियलिटी बना दिया है। तो तभी आदित्य कहता है तुमने सही कहा, पहले तो सभी दोस्त इस बात को सुन के हंसने लगते हैं। तो तभी ना काजल कहती है कि भी इसने तो हमारी जिंदगी पे ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी डाला है, कि जो इंसान है वो अपने काम करने की क्षमता को खोने लगे हैं और ना मशीन पर डिपेंडेंट होने लगे हैं। तो ये मोहित कहता है कि इसके हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है we also have to see about the time. Yes. It's going to be 5 minutes, right? You can take 30 seconds. ओके सर, सिर्फ पूरी होने वाली है स्टोरी, बस 10 सेकंड्स। तो कहते हैं कि यूट्यूब ने हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी दिए जिससे हम अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। तो तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और तो सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने आने वाले जीवन की कल्पना करने लगते हैं। थैंक यू। Thank you, Himanshi. Moving to the next contestant, Mehak from University Senior Secondary Model School. Mehak? Yes, ma'am. Mehak, please start on your camera. Camera setup. Yes, take your time. After Mehak, there is Krish from the same school. Be ready. Krish, be ready for that. Mehak, then Krish, and after Krish, Megha. नमस्कार, मैं महक यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल से आज आप सबके सामने वुमेन इन स्टेम टॉपिक पे एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की जो कि बहुत गरीब परिवार से थी। उसके फादर सर्कस करते थे, तो क्या हुआ उसे ना इन नंबर्स के साथ खेलना बड़ा पसंद था, पजल सोल्व करना, ये करना वो करना। तो एक बार उसके फादर उसको ना ये जो अपने कार्ड्स होते हैं ना इनकी ट्रिक सिखा रहे थे कि हम ऐसे शफल करते हैं, हम ऐसे जो तुम
कार्ड यूज करते हैं उसे निकालते हैं। तो क्या हुआ, उसने ना वो बहुत ही जल्दी सीख ली, बिल्कुल थोड़े टाइम में। तब उसके फादर को पता चला कि हाँ कि ये इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती है, कैलकुलेशन में, पजल सॉल्विंग में बहुत आगे जा सकती है। और जब वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी, तो उन्होंने ऐसे किया, वो ना सर्कस करते थे तो ब्लैक बोर्ड पे एक नंबर लिख देते थे, बोलते थे बड़ा सा नंबर, इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करके दिखाओ। तो लोगों को कहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगाते थे या फिर गलत करते थे। फिर अपनी बेटी को बुलाते थे, कहते देखो ये मेरी बेटी है ना, बहुत ही कम सेकंड में इसे करके दिखाएगी। तो वो करके भी दिखा देती थी। ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे, उनको काफी सारी तारीफ मिली। जब वो 6 साल की थी ना, सिर्फ और सिर्फ उसने अपना ये स्किल शो की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के अंदर कि देखो मैं बहुत ही कम टाइम में ये बिल्कुल सोल्व करके तुम्हें दिखा दूंगी। ऐसा कोई स्किल शो करता है तो हम देखते हैं कि हाँ भाई इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या किया है, जिसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, कितनी मेहनत किया। पर वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी। तो वो ना ऐसे ही बढ़ती आगे चलती रही, पर ना वो कभी स्कूल ही नहीं गई, क्योंकि वो बड़े गरीब परिवार से थे। वो अपने पापा को बोलती भी थी कि पापा मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने आ गए। तो उसके पापा बोलते थे तू क्या करेगी स्कूल जाके, तो कोई इतना तो आता है, तू तो स्कूल को ही सिखा देगी। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थे, वो नहीं अफोर्ड करते थे स्कूल में भेजना, अपने अच्छे स्कूल में अपनी बच्ची को भेजना। तो क्या हुआ, जब वो 10 साल की हुई, उसका एक स्कूल में एडमिशन हो गया, बड़ा सा स्कूल था, बिल्कुल अच्छा स्कूल था उन्हीं के वहीं पे। तो पर ना वहां से भी उसको बाद में निकाल दिया, क्योंकि उसके माता पिता स्कूल की महीने की फीस अफोर्ड नहीं करते थे, जो कि 2 रुपए थी उस टाइम में। तो आप देख सकते हो उनके हालात कैसे रहे होंगे, कितने वो गरीब होंगे। पर उस लड़की ने ना कभी भी हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ती रही। उसने काफी सारे इसमें रिकॉर्ड बनाए, नए रिकॉर्ड बनाए, कहीं तोड़ दिए पिछले रिकॉर्ड जो इसमें कैलकुलेशन वगैरह में थे। और फिर उसने क्या हुआ, ऐसे ही वो करती थी तो एक बार उसने 201 संख्या के नंबर का 23वां रूट निकाला था, सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड के अंदर, जिसको चेक करने के लिए कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है। अमेरिका को स्पेशल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डिजाइन करने पड़ गए थे कि हाँ भाई ये ठीक है नहीं, और एंड में वो ठीक ही मिला। और वो लड़की और कोई नहीं, हमारे इंडिया की शकुंतला देवी जी हैं, जिसे हम ह्यूमन कंप्यूटर और ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सन 1982 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कराया था। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि तुम्हारे हालात कितने भी कैसे हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, पक्का तुम्हें सक्सेस मिलेगी। उन्होंने मैथ में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने ना काफी ट्रिक्स बताई थी हमें कि इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कम टाइम में निकल जाएगा, ये करोगे तो डिवाइड ऐसे होएगा, ऐसे रूट निकाल दो, बहुत कुछ। और बहुत ही कम सेकंड में वो करते थे। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हार्ड वर्क, जब भी तुम हार्ड वर्क करोगे वो पक्का तुम्हें पे करेगा। तुम्हारे हालात कितने भी गंदे क्यों ना हो रहे हो, बस तुम मेहनत करते रहो, कभी हार ना मानो, नेवर एवर गिव अप। थैंक यू। Okay, Mehak. Next is Krish from University Seniors Model School. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, बेटा you are audible. अपना कैमरा रोटेट कर लोगे 90 डिग्री पे? Yes, ma'am. Okay. या डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर हरदीप ऐसे ही चल लेंगे? इट्स बेटर टू रोटेट। क्रिश ट्राई कीजिए, अपना डिवाइस को सीधा रख लीजिए। हाँ जी, हाँ, बस Yes, it's fine, fine. yes, ma'am. I am Krish of, good morning everyone. I am Krish of class 9 from University Senior Secondary School. I am here to discuss about the topic energy harvesting and storage with the help of a story of a mother trying to tell her daughter Ria to conserve energy. Let us start the story. The room was shining, all lights were switched on, the music was loud, the cartoon was shouting on the television, the air conditioner was throwing cold air on Ria's face. Ria did not notice her mother. Today she needs to learn what it is to save energy. Ria's mother mumbled to herself. She
She asked, Ria, I want you to save energy. Save energy, she replied. You mean I should not go to play today? Her mother said, No, no, that's not what I meant. Of course, you must do exercise and play every day. I think we'll show you what I mean. She went to television, music system, and computer and shut them off. Ria cried, but mom, then her mother asked her to that her mother asked her by showing a piece of paper that do you know what it is? This is the electricity bill, Ria recalled. But mother pointed on paper and said, no, look at the amount on the bill. We don't have money, asked Ria. No, you are not getting my point, said her mother. You just switch off the air conditioner, ordered Ria's mother. But it is so hot today, she said. You just switch off the. If it is so hot, then just open the windows, her mother said. Ria did so. Suddenly, a cool breeze blew into the room, and Ria decided to leave the windows open. She said, can I watch the television and listen to the music now? Her mother instead of giving answer to Ria, her mother said, let's have a picnic and pick up a few books with her. Ria said, all right, I will watch television later. They set up their picnic in a shade of tree. They set up their picnic lunch in a mat. Ria's mother took out a book and gave it to Ria. Ria shouted, hey, a comic book, with joy. Ria starts to read the book and a bird hopped close to her to eat some crumbs. Ria suddenly said, Mom, reading to this comic and this bird's music is so good. It is more better than watching television. Some ways of Krish, carry on. Okay, sir. Her mother said, Ria started thinking and said, I think I am getting it now. You were cutting down on uses of gadgets. All gadgets use electricity or battery, and even our car uses energy. So I think I should walk or cycle to my friends' houses. Her mother immediately said, oh yes, it is a good idea. Some ways of conserving energy is at most simple and anybody can follow it, like Ria and her mother did, by making sure that we all use electricity when it is needed. Thank you. Okay, so next is Megha. Megha. Yes, ma'am. Megha, turn on your camera. Megha is left. So next is. Looks like she will rejoin. Okay. We'll So see. we can Just, wait, sir, for a moment. Yes. Yes, Megha Sharma. Megha Sharma Yes, from ma'am. University Senior Secondary Model School. I'm audible, ma'am. Yes, you are audible. Good afternoon, everyone, honorable judges, all my participant friends. I'm Megha from class 11, student of University Senior Secondary Model School, Kurukshetra. Today I'm talking about Indian contributors to science and their work. Let's start our story. ये स्टोरी हम सब फ्रेंड ग्रुप की है. हम सब फ्रेंड्स ऐसी बातें कर रहे थे. हम बातें करते करते हम इन्वेंशंस की बातें करने लगे कि कितने सारे इन्वेंशंस हुए, कितनी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है आज हमारी. हम बातें कर रहे थे तो हम जैसे हमारी मैथ्स इतनी एडवांस है, उसमें इतने सारे न्यू फॉर्मूलेज आए. तो मेरी दूसरी फ्रेंड बोलती
कि अगर आर्यभट्ट जीरो की इन्वेंशन नहीं करते तो क्या आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो पाती? जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, उसमें भी 0 और 1 डिजिट यूज होती है। अब अगर वो जीरो ही का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता तो क्या आज हमारे कंप्यूटर्स बन पाते? तो आर्यभट्ट ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सॉरी ऐसे हम बातें कर रहे थे कि एक लेडी हमारे पास आई, हमसे हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रही थी। तो हमने उसे एड्रेस बता दिया। तो हमने पूछा, दीदी आपको हॉस्पिटल क्यों जाना है? तो उन्होंने बताया कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है अपनी। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती कि पहले लोग अपनी बीमारियों का ढंग से इलाज नहीं करवा पाते थे और आज अपने चेहरे के दाग तक को मिटवा लेते हैं एक सर्जरी के कारण। तो वो पूछ रही थी कि इसका इन्वेंशन किसने किया? तब मैंने उसे बताया कि इसका इन्वेंशन ऋषि सुश्रुत संहिता जी ने किया था। उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बातें करते करते हम रॉकेट्स की बातें करने लगे कि इतने सारे रॉकेट्स है। फिर हम सोच रहे थे कि ये रॉकेट्स बने किसने, किसने इन्हें इन्वेंट किया है, कहाँ बने? तो मेरी फ्रेंड की मम्मी Again, some network problem is there, maybe. Yes, yes. So what we do, sir? Dr. Meenakshi, I think we should move to next. Megha has joined, I think. Megha Sharma, are you still presenting? Yes, yes मैम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप लेफ्ट हो रहा है। So hurry up, complete your. Should I start, मैम? Yes. तो फिर हम बात उसकी मम्मी के फ्रेंड के पास, अपने फ्रेंड की मम्मी के पास गए। तो उन्होंने हमें बताया कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए आयरन के रॉकेट्स बनाए थे। उन रॉकेट्स के उन्होंने आयरन ट्यूब्स बनाकर उसमें गन पाउडर डालकर आयरन के रॉकेट्स बनाए थे। उससे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने में हेल्प ली थी। ऐसे हम बातें कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड बोलती कि भी हमारे इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। थैंक यू। Thank you, Megha. Next participant is Harshimran Kaur. Harshimran Kaur from University Senior Secondary Model School. Yes, ma'am. Harshimran, please continue with the. Ma'am, just a minute. Good afternoon. Judges, please note down. We have another participant, Miss Avika Goel, at serial number 5. हाँ, Serial number 5. हाँ, वो अभी आ गए हैं और लास्ट में एट द एंड हम उनको कैरियर करेंगे। Okay, okay. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible, बेटा। अगर अपना कैमरा रोटेट कर लो 90 डिग्री पे, इट्स बेटर। Ma'am, just a minute. So Tanankor, you can put your camera horizontal position. Yes, this is fine. Good afternoon, everyone. I'm Harsimran of Standard 11 from University Senior Secondary Model School. Today, I am going to discuss about food safety with the help of a story. Once there was a boy whose name is Max. Max loved eating burgers, chips, chow meins, and everything that mom called junk. He ate junk food in breakfast, lunch, dinner. His mom always said to him, Max, it is fine to eat junk food once in a while, not every day. You should also eat healthy food like vegetables, salad, etc. Max would smile and say, Oh no, I will eat only what I want to eat, nothing else. One day his mom said that he did not fed rough anymore and asked Max to take care of it.
Max smiled and took Ruff into his bedroom. That night, the two of them had lots of sweets. When Max got up, he saw that Ruff was lying on the floor. He was sick. Quickly, Mac decided to take him to a doctor. When he tried to get dressed up, all the buttons of his shirts went pop, pop, pop. And when he tried to put his pants went rip, rip, rip. Max cried and said, "Oh no, my shirt has shrunk. What will I do now?" Mom heard Max crying and went to his bedroom. She was about to say something, but suddenly she started screaming. Both Max and Ruff started expanding and growing. Max became fatter and fatter while Ruff expanded wildly. Soon Max started feeling suffocated. Max was trying to get out of the room, but he just could not get through the door. Max had to break the door to get out of the room. Quickly, he got to the kitchen and looked something to eat. "Here, take this," said Mom, and asked him to try a glass of milk. Max had it. Then he shrunk a bit. Next, his mom made bowl of vegetable salad. The moment Max had it, his body started shrinking slightly. Suddenly, he realized that his mom was shaking him. It was morning, and his mom again scolding him to eat sweets throughout the night. Max hugged his mom and said, "Mom, I'm sorry. I promise I would not eat junk food from now on." Mom was surprised to see this change in Max. But on the other hand, Max thanked the God that whatever happened was just a dream and he was safe. At the end of the story, I want to say that eating too much junk food is very harmful for us. It maybe leads to various diseases like obesity, heart diseases, cholesterol, etc. So we should eat proper diet, safe and proper food to get proper nutrients. Thank you. Okay, so next we have Karan Singh. Karan, please turn on your mic. आपका माइक्रोफोन ऑफ है. करण आपका माइक ऑफ है बेटा. It's okay. Start again. I Karan from class 10, University Senior Secondary Model School. I here to discuss about the topic, the India contribution in science and in their work. Let us start. One day, nearly 10:30 p.m. at night, I was watching toward the sky and thinking about my previous journey when I got to my village. There, as a winter time, we made a wood fire there, and we discussing about different topics. We started discussing about moon, and जो मेरी दादी जी थी वो हमें बताने लगी कि मून पर क्या होता है. एक झाड़ू पर बैठकर उड़ने वाली बुढ़िया रहती हैं. तो मेरे भैया बताने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारी एक बनाई हुई स्टोरीज हैं. तो उन्होंने बताया कि जो मून है वो हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है. और जो मेरे चाचा जी कहने लगे फिर जो आजकल तो काफी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी आ गई हैं. इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा, जो कि हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर श्री आर्यभट्ट जी के नाम पर रखी गई थी, जिन्होंने हमें जीरो की डिस्कवरी की थी. एंड पाई की वैल्यू अप टू 4 डेसिमल्स के बारे में उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम में बताया था. एंड उन्होंने बहुत पहले ही हमें ये बता दिया था कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड शेप्ड है. एंड तब जब चाचा जी ये सब बता रहे थे, मैं सोच रहा था कि अगर जीरो जो हमारे कंप्यूटर हैं आज के, वो 0 and 1 की बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं. एंड अगर जीरो की डिस्कवरी नहीं होती तो आज तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती. एंड फिर मेरे पिताजी हमें बताने लगे कि एक टाइम था जब हमने आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च की थी, तब हमने रशिया की हेल्प से लॉन्च की थी, लेकिन आज हमने एक साथ 104 सैटेलाइट खुद से लॉन्च करके एक रिकॉर्ड भी बना लिया है. इवन की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट एक इंडियन तमिलनाडु के रहने वाले रिफत शाहरुख के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है कलाम सैट, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखी गई है, जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में बहुत काफी योगदान दिया था. इसलिए आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. तो जब दादी जी ये सब हम डिस्कस कर रहे थे, तो दादी जी कहने लगी
कि आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से हम काफ़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो अभी मेरे भैया ने ये भी बताया कि आज का जो हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, ये फाइबर ऑप्टिक्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है। और फाइबर ऑप्टिक्स की खोज इंडियन फिजिसिस्ट नरेंद्र सिंह कपानी जी ने करी थी। उन्हें आज हम फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का आज के मैं स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम भारत का साइंस में काफी बड़ा योगदान रहा है। अगर हम ऋषि आर्यभट्ट जी, महर्षि कनाद जी, जिन्होंने हमें एटम के बारे में बताया, उन्होंने परमाणु नाम से संबोधित किया था। एंड महर्षि चाणक्य जी, जिन्होंने फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं। महर्षि सुश्रुता जी, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की डिस्कवरी की थी। आज के टाइम में हम देखें तो सीवी रमन जी, जिन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया। श्री नरेंद्र सिंह कपानी जी, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं। हमारा इंडिया का आजकल की साइंस में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। थैंक यू वेरी मच। Okay, next participant is Sophia. Miss Sophia from Maharana Pratap Public School. Good afternoon, all of the judges. I'm Sophia from Maharana Pratap Public School, class 9. Today, my topic is women in STEM. So, let me begin, please. There was a girl I knew. She was much older than me and was struggling to pay her college fees. She was devastated. She was going through a really hard time and she started to lose her confidence. But one day, I saw her sitting alone on a bench and she was smiling after so long. So I went near her and asked her that what was going on in her life. So she told me that her parents want her to get married and quit studying. So I was so shocked that she was still smiling because as long as I knew her, she was a very ambitious girl and wanted to become an astronaut. So I asked her calmly then what was she going to do? So she told me that maybe I should just quit studying and get married because I can't even pay my college fees and what am I going to do? So I quickly snapped that you can just figure it out after some time. Everyone needs a break and everyone goes through a hard time. You can just figure it out after a month or two. So she told me that she can't even pay her college fees and what is she going to do in the future? So I tried my best to motivate her, although I agree that I was younger than her, but I was I was clearly able to sense that it was not right that a really ambitious and talented girl is just going to marry and be study. So I do my best to motivate her, but she didn't listen to me. So I asked that maybe we would go for a walk now. So while we were walking, I asked her that, do you know about Kalpana Chawla? She said, yes, I've heard about her. She was a very famous astronaut. So told her that you remind me of her. She is actually my role model also. So she said how she was a very great astronaut. How can I be competent enough to remind you of her? So I asked that she was very ambitious, just like you. But you are changing, She was, she was, I know she was your role model, but you are changing that you are quitting your studies just because you can't pay your college fees. So I actually wrote some lines about Kalpana Chawla. Do you know when I was when I that time I was in seventh grade, so I wrote some lines about Kalpana Chawla. So she asked me then that can she hear them? Can she hear them if I don't mind? So I told her that yeah, sure, I have no problem. So when I let me just read those lines again. वो नन्ही सी जान जो भारत से आई थी हजारों ख्वाब आंख में लिए आई थी वो पूरी दुनिया पर छाई थी पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनकर आई थी
वो प्यारी सी लड़की जो कल्पना कहलाई थी. She was so happy after hearing those lines, and she told me that I did write very well. So when I asked her that you can also be like her. You can also be an astronaut just like her if you work hard and don't give up. Although I was very younger than her, and I wasn't sure that she would take my words seriously or not. But after that, she just hugged me and ran away. So after a month or so, I heard some of my friends talking about her. They were talking that she was now graduated and studying in a very famous university. Uh, I was very happy hearing that, and after you can say 3 or 5 years, I saw a car. I was very happy just to see that it was that girl I motivated last 5 years. So I was so happy seeing her, and she thanked me a lot. Then I got to know that at that time she just decided that she would do part-time job, and don't she decided that she is not going to get married and end up like other women that just give up their dreams to get married. So this is my story, and I want to tell all the women out there that just like that, just like that girl, every woman, whether it is a housewife or whether it is a working one, no matter what age, everyone can do it, just like Kalpana Chawla and that other girl. Thank you. Sophia, very well done, Bitan. Next is Miss Palak Kumari from GGS Kamuda. Serial number 24, Palak. Yes, Palak, please carry on. On your mic first. Mic on karo beta. Good afternoon, ma'am. Please carry on. I am Palak Kumari. I study in 11th grade with science background in GSSS Kamoda School in Kurukshetra. First of all, I want to tell you about two main achievements of India. First of all, invention of zero. In 5th century, Aryabhatta has used zero first of all. Who was the first Indian mathematician? In one day in class, our teacher came and tell us about Indian contributors in science. First of all, she asked us about C.V. Raman. He was born in 7 November 1888 and he died on 21 November 1970. Sir Chandrasekhara Venkata Raman was an Indian physicist who won the Nobel Prize for Physics in 1930, known for his work in the field of light scattering known as Raman effect. He was the first to investigate the harmonic nature of sound of the Indian drum, such as the tabla and the mridangam. At number 2, we have the most famous scientist APJ Abdul Kalam. Then suddenly one of my friend asked the teacher, who is Abul Paki Jainulabdin Abdul Kalam? Then teacher asked us, Abul Paki Jainulabdin Abdul Kalam, an Indian scientist who worked as aerospace engineer with Defense Research and Development Organization and Indian Space Research Organization, and he was the 11th President of India from 2002 to 2007. He thus came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, and played a pivotal role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998. One of my friends asked the teacher that what is the main role of Homi Jahangir Bhabha in science. Then teacher tell us that Homi Jahangir Bhabha was an Indian nuclear physicist
was also the founding director of the Bhabha Atomic Research Director Center, the cornerstone of Indian development of nuclear weapons. He played an important role in quantum theory, which is used in chemistry. He is known as the father of Indian nuclear power. And teacher also tell us about Vikram Sarabhai, who was born in 12 August 1919 and died on 30 December 1971. He tells us that Vikram Sarabhai is an Indian physicist and astronomer who initiated space research and helped develop nuclear power in India. He played a major role in the launch of India's first satellite Aryabhatta. He is known as the father of the Indian Space Research Organization, ISRO. And I also want, then the teacher asked us about Jagdish Chandra Bose. So Jagdish Chandra Bose, CSICIEFRS, was a biologist, physicist, botanist, and an early writer of science fiction. He pioneered the investigation of radio and microwave optics. IEE named him one of the father of radio science. At last, she tells us about invention of surgery. She asked us that invention of surgery is organized in India. First of all, Maharishi Sushruta invented the surgery. Thank you, ma'am. Thank you, Beta. Moving to the next contestant, I think this is last one, Miss Abika. Miss Abika Goel. Serial number 5, Miss Abika Goel. Avika, turn on your camera. Good morning, everyone. Today, I, Avika, from the Millennium School. Abika? Beta, are you there? I think Looks like she finished to come here. she might take a while for joining. Yeah. After Abika, we will all please, I request you all to on your camera so that we'll take a group photograph, on screen group photograph. So after Abika, please all are requested to on your camera, those who have been present here. Sorry, judges, I was facing some network issues. It's okay, Abika, you can't. Good morning. Myself, Avika. I am from the Millennium School, Kurukshetra, from class 9th. Today, I am going to speak on topic Women in Science. There was a lady who was very dedicated, very determined to her work. She was so dedicated that she often missed her meals while she was working. She loved her work so much. She wanted to discover something for which the world should know her. One day, she was taking nap in her lab. All the lights of the lab were off. When she woke, first of all, she opened her drawer and saw a glow in it. She was very fascinated after seeing that, and she wanted to know what is the reason behind it. She researched very much to know what is the reason behind it and found that it was nothing but the phenomena of radioactivity. And now, I am sure that everyone present here has got an idea that whom I am talking about. Yes,
She is none other than Madame Marie Curie. She is a Nobel Prize winner for her discovery about phenomenon of radioactivity. She is known for her work in science and chemistry. She is one of the famous scientists and has done very much in the field of science. Thank you. Thank you, Peter. So I request everyone, those who are been present right now in the meeting, please on your camera so that we'll take the group photograph. Neera ma'am, please rotate your camera by 90 degree. So every participant, those who are present, Vanshika, Aira, Riddhima, if you are been present here, please on your camera. Neera ma'am, please on your camera. Mine is on. It's not seems to be on here, no? I have joined from. Neera ma'am is visible, Suman. Neera ma'am is visible. Visible. I don't know why not at my. Okay, just me. Yeah. Maybe my. So just taking a few clicks. Just wait for a moment again. Thank you, everyone, and we'll announce the result after a while, and we'll post the result on the WhatsApp group. Okay. Yes, Mr. Sunil, you raised your hand. Okay, maybe by mistake. So good luck for everyone and have a nice day. And we'll announce the result. Suman, I just want to say something. Yeah, please, Dr. Meenakshi, please. So first of all, I congratulate Dr. Neera and all the team members for organizing this science conclave and carnival. Sorry, and basically this is science with fun. So in today's event, every student talk about science and communicating science through their stories, and really we enjoyed a lot. I hope Dr. Hardeep Anand is very much agree with me. And every story raises some awareness and motivation and a lot of new knowledge also. And all the participants presented very nicely their stories, and the topics are very appropriate and need of the hour. So I congratulate all the participants also. Thank you, Dr. Meenakshi. That was the moral behind this science carnival. Exactly. So the kind of this competition is very much new to everyone, that science storytelling competition. But right now, coming to these days, that we have been just covering everything on phone, on videos, or itself. So we want just something to add on the students that they have been gaining, so that they can give their own script towards single topic. They can express their view, they can express how to depict any topic in their own manner, so that anyone, those who have been listening them, they can enjoy and grasp it as much. So Because in some presentation or in some stories, we just engage with the idea and the story, what is happening, and very engaging. Yeah, that was the desire. Okay. स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है and really creative stories came out of this event. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. All the students, very nice. So, students, so just wait for a while for your results. We'll announce the result on your WhatsApp group. Soon we get it from the jury members. And have a nice day. Dr. Suman, do we have to log out?
I think so we can. Okay, madam. Yes, Dr. Sir. हेलो, हाँ जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ. हमें मैम लॉग आउट करना है या हमें हाँ लॉग जी, इन नहीं आप करना? अपना डिसीजन लेके and then you can let the organizers ओके know. मैम, ओके. सुमन को बता दीजिए. ओके मैम, श्योर, ओके. जी, okay. Thank you all.